computer. Okay. So give me a moment. So just a moment. Let me instruct the one person. Hanji, everybody, please kindly switch off your audio part because it is disturbing not only to me but also to your other colleagues. It's a serious thing. That's why we are here at 8 o'clock in the morning, and everybody is not up like the way you are, though you are supposed to be like this every day in the morning at 8 o'clock at the computer. Not on the mobile, but at the computer screen, which means laptop or desktop. Otherwise, on a mobile, सुन सकते हैं आप जो मैं बोल रहा हूं, but आप पढ़ नहीं सकते. खुद अगर मेहनत करना चाहते हैं तो वो होने वाली नहीं. Okay. So, as I said, that there are many things in this need to be refined, and we will today we will concentrate on a particular thing of cinema. I checked out something which I wanted to talk about today is called FTI Alumni. Okay, so FTI Alumni is something which is very important. FTI, when I say FTI, it means also included the SRFTI. It is not only FTI, but also included the SRFTI Calcutta. SRFTI Calcutta Alumni is not so much well known. I would say roughly around 10 or maybe 15 people, not more than that. I would say 10 only. Though well known, when I say well known, means it is a question of general knowledge. When I use a word well known, there are some advertising filmmakers. They are cinematographers in an advertising industry, for example. But advertising industry cinematographer nobody knows. Until unless you shoot a feature film and happens to be an important director. अगर तुम गुड्डू धनोआ की फीचर फिल्म शूट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं. गुड्डू धनोआ किसी को नहीं पता. गुड्डू धनोआ के ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है. वो एक अलग बात है कि उसने 10 फीचर फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं. कोई एक आदमी बताएगा गुड्डू धनोआ ने कौन सी फिल्म डायरेक्ट की है? सोच में पड़ जाओगे. गूगल में ढूंढते हुए नहीं रहोगे तुम लोग. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. उसने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है जिंदगी में जिसकी वजह से वो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन पाए. ओके, so question, when I say FTI alumni, it also means SRFTI alumni, and only those people who are a kind of a celebrity, whether they are technicians, whether they are directors, or whether they are a cinematographers. So as I said, that not so many people have made it a big from SRFTI, but FTI alumni, many of them are important people, and you are supposed to know about them. When I use the word supposed to know, you may not have heard of that name so far, because so far you are not preparing for FTI, for example. एक आदमी का अभी भी जो है थोड़ा वो चल रहा है ये ऑडियो, थोड़ा बंद कर लीजिए आप जरा. So we will talk about some of the important alumni over here, and that's it. Okay, so I'll go to the cinematographers. This is not a extensive list. I have included something more in a different section called technicals. We will talk about that also. Okay, so first question is, which of the following is the only feature film directed by Ashok Mehta? Ashok Mehta is not actually FTI alumni, but why I have included this question? It is a technical question related to cinematographer in general. But Ashok Mehta is, if today in India, if there is a polling that which are the 4 greatest cinematographer in India who were ever born, so definitely Ashok Mehta's name would be one of those 4 people. 3 may be
somebody will choose Subroto Mitra, somebody will choose KK Mahajan, somebody might also choose someone else, but Ashok Mehta would be definitely there. So as a technician, particularly those people who are appearing for a cinematography course, it could be a question of MSQ for you people also, which are the films shot by Ashok Mehta as a cinematographer. So you should be familiar with his filmography also, particularly the important films. Like he shot a feature film for Grish Karnal. What is the name of that film? So you will scratch your khopdi and keep thinking, "Kare kaun aadmi ka naam pooch rahe ho?" If there would be a difficult, you are attending this because what are the difficult questions which can be asked? Simple question तो सभी लोग कर लेंगे वहां पे बैठ के. वहां पर अगर 6000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, 6000 में से 3000 लोग तो सिंपल क्वेश्चन कर ही लेंगे. अब क्वेश्चन क्या है कि कौन आदमी डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा. So this class is meant for those difficult questions which can be formulated according to my mind. It may be and maybe, and 95% of the time it may not be. I'm repeating the word 95% of the time, but those 5% are worth listening for these 2 hours. So Ashok Mehta directed a film called Moksha. Moksha was the film which Ashok Mehta directed, but he again did not receive the award for a director, but he again received the director for a best cinematographer. So Moksha was the film for which he was awarded the best cinematographer national award. So the question is, always read the question carefully, because if you do not read the question carefully, you may end up answering wrong. So which of the following is the only feature film directed by Ashok Mehta? The word is only. Definitely he has done only one feature only, so that is called Moksha. There are some images. Let me just show you, because images would be able to connect. This is how Mr. Mehta look like. Most of the time, 95% of the time, whenever you see his photograph, this is with a cap, this kind of a hat. And this is a Moksha. You can see the 2 well-known actor and actresses in the film. Though the film was not a big film, people don't remember this film. But again, it is important because it received the best cinematography award of that particular year for Ashok Mehta. Okay. Who shot the Cloud Door? Now, this is a little tricky question for those who don't understand the art house cinema. Mani Kaul, I have also said in my previous lecture that Mani Kaul is an important director from the FTI history. 2 people who are considered very important in the history of FTI is Mani Kaul and Kumar Sahni. These names are kind of synonyms. Whenever the Mani Kaul is being talked about, the discussion of Kumar Sahni is bound to come. So both are poles apart. The films of Mani Kaul are totally different from the films of Kumar Sahni. But both are important, and this was the first film which Mani Kaul got a funding from abroad, because of not exactly first film, but I would say first feature film, because it was a series of erotica produced by a German production house, in which variety of filmmaker all over the world are being chosen. One who was chosen from India was Mani Kaul, because he happens to know some people in that group. That's why his name was recommended. Not because he is the greatest filmmaker from India, but because he has a much more better network internationally, particularly German network. So Cloud Door is the film. The question is, who shot the Cloud Door film, which was part of erotica series directed by Mani Kaul? So there the director name is being mentioned, but they are asking a question about the cinematographer. So it is Anil Mehta who shot this film, because Anil Mehta later on became a well-known cinematographer among the feature film industry. But when you look into his filmography, Anil Mehta was much more into the advertising before he shot the Cloud Door. So the answer is Anil Mehta. Let me just show you the images. If there is, no. Okay. So you can easily find Anil Mehta's photograph on the net. And Cloud Door's photograph will be difficult to find, because it was a kind of art house film and short film, basically, not a long feature length film. So it was a part of series, as I said, made for the television, German television network, ZDF. So who shot the film सतह से उठता आदमी? ये सब देखो नाम जो है ना, ये याद करने पड़ेंगे अगर एफटीआई घुसने का तुम लोग सोच रहे हो तो. ये टेढ़े मेढ़े नाम है, सतह से उठता आदमी. ये उसी आदमी को अता पता होगा इस नाम का जो थोड़ा पोएट्री वोएट्री पढ़ता है, हिंदी विंदी की. अब कोई केरला का आदमी हिंदी की पोएट्री तो नहीं पढ़ता.
बट लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया था विजय दान देता की बुक के ऊपर। तो उन लोगों के लिए मानना है कि हिंदी का जो लिटरेचर है वो नेशनल लिटरेचर है, चाहे आप उड़ीसा से हो, बंगाल से हो या केरला से, they have nothing to do with it. Hindi literature they always consider as a national literature, though you may have a different opinion. I do not want to discuss that. So the film shot, who shot the film Satyaj Se Uthta Hua Aadmi? Money Call is important because of some other reason also. He is the only director who has given 4 cinematographers to the industry, which means the people who worked with him later on became big cinematographers. Piyush Shah is one of them. Film is not shot by, देखो ये खटपट खटपट आवाज आ रहा है, यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऑडियो को बंद कर लो। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी सबों को समझ आती है। And if you don't understand Hindi, kindly switch it off. Okay? Please, it is disturbing others also. So Satyaj Se Uthta Hua Aadmi is not shot by Piyush Shah, but it was Virender Saini. So Virender Saini also received the national award for a which feature film? Virender Saini received a national award for which feature film? Cinematography के लोग Mighty Manas. हाँ जी, जागो जागो। Mighty Manas. Virender Saini received the national award for which film? ढूंढो गूगल में बैठ के। Okay, so we'll move again. So Saini worked with the film with the Money Call, and that's why later on people hired him, because it was the same batch of 1975 when these people graduated. Money Call graduated much more before, but he used to go to the FTI and all that. 75 batch has produced the maximum stars in FTI, from FTI. For example, I'm just quoting an example. Renu Saluja is the only star editor from FTI. There are many other people also, but she is the star. Again, 75 batch. Vidhu Vinod Chopra, again the 75 batch. So many people, Kundan Shah, Saeed Mirza. सईद मिर्जा का एक फिल्म है सलीम लंगड़े पे मत रो, जिसने नाम नहीं सुना वो कान का मैल निकाल के सुन लो आज. So Virender Saini got the national award for which film? Salim Langde Pe Mat Ro. That was the film for which he got the national award. So moving back again to further another film. Who among the following options is false statement about the film Thinking of Him? अब देखो क्या है, MCQ और MSQ में ज्यादा फर्क नहीं है, समझने की कोशिश करो. वहां पर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है. 4 नहीं होगा, नॉर्मली 2 या 3 का होगा ऑप्शन, क्योंकि 4 अगर होगा तो कोई ना कोई तो लगा के आओगे ही आओगे, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा तुम्हें. तो करेक्ट तो सभी हो गया एक तरीके से. तो बेसिकली 2 या 3 का ऑप्शन हो सकता है MSQ के अंदर, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है. जिन लोगों को मालूम नहीं है वो जरा देख लें, पढ़ लें क्या नेगेटिव मार्किंग का स्कोप है उसके अंदर. कुछ भी उठपटांग लगा के आ जाओगे तो जो है मार्क्स कट भी जाएंगे. हालांकि 50% का नेगेटिव मार्किंग होता है कई जगह, कुछ एक जगह 25% का है, तो चेक कर लेना कि 25% का नेगेटिव है या 50% नेगेटिव. हाँ जी, तो ये फिल्म जो है थिंकिंग ऑफ हिम, बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर का एक पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ लाइफ है which he spent in the Argentina. So she had a kind of a fan over there, and she invited him over there to deliver a talk, and Tagore went there and stayed for 2-3 months, kind of a thing. So last 3 years back, before the COVID started, this film was produced by a producer based in Delhi. Basically, this guy is from Odisha, and it's a co-production between Argentina and India. And to my mind, if Victor Banerjee has done one of the best work in his life, it is one of those films. I could not think of anybody else playing Rabindranath Tagore. Like, playing Tagore is not a joke. When you're playing a celebrity like Tagore or a Gandhi or a Nehru, you really have to have something like that. And particularly when it happens to be of that stature, where the Nobel Prize is attached to the celebrity and all that. So this film is a partially black and white and partially color.
Now, why I have selected this particular question? Because of a specific reason. A, it is a Rabindranath Tagore. B, it's a Victor Banerjee. And C, this was a closing film of the Goa Film Festival. So there are few facts about here. The film thinking of him, which revolves around the relationship of legendary intellectual Rabindranath Tagore, poet and ये word जो है ये मिल गया है तो थोड़ा छोटी मोटी मिस्टेक है वो ध्यान रखिएगा. Poet and intellectual Rabindranath Tagore, yes. Rabindranath Tagore is played by Victor Banerjee, yes. It is shot by a DOP Sudeep Chatterjee, no. It is an Indo-Argentinian co-production, yes. तो गलत क्या हुआ इसके अंदर? इस फिल्म जो है सुदीप चटर्जी ने शूट नहीं किया है. तो जब आप कोई भी फिल्म को अब आप फिल्म मेकिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आपको फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है यही नहीं समझना है. आपको ये भी समझना है कि फिल्म का मेन सिनेमेटोग्राफर कौन है, फिल्म का मेन एडिटर कौन है, मेन साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन है. And I would also say that you also need to remember the art director, which is called set designer. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कोई ऊट पटांग का नाम साउथ से तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आदमी कौन है. वो ऊट पटांग का नाम तुम्हारे लिए इसलिए है क्योंकि तुमने जिंदगी में पहली बार सुना है. बहुत सारे नाम अभी आएंगे थोड़ा सा जो जिंदगी में तुमने पहली बार सुने होंगे. तो अब आप पूछेंगे हम क्या करें, हमने तो पहली बार सुना है. तो आप जीवन में कभी ना कभी फर्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज first time you will, sometime there will be a first time. Call it as it now, but you need to study a little bit more deeper about these people's work in the future. Okay. So anybody wanted to ask something? Okay, no problem. We'll move further. So these are the things, and there is an option also over here. So this is the one page about the few things, and then we'll move to the next page called director. So mainly I have included not all the people, but some of the people I was able to include in this one, and it will give you an idea about what kind of question which can be formulated. I'm using a word, what kind of question. This is not an exhaustive list. This is just an idea that these kind of question can be formulated. Okay. So we'll start with a Nazar. Not many people knows about this film called Nazar because it was an art house film which was directed by Manikal. And surprisingly, Shekhar Kapoor acted in that film. So Shekhar Kapoor, sometimes he is not a well-known actor as such, but occasionally when somebody will cast him, he also acted in a TV serial. He also acted in some ad films, but not main lead character into a feature film. Nobody hired him as a lead. He tried one or two films earlier in his career, but later on he was wise enough to move to the direction and really could create a name for himself as a director. But in this particular film, he was a actor. So now what are the various angles from where a question can be formulated? So the most important angle about this is that director's name is also being told to you people, which is called Manikal, and the film name is also being told Nazar. Year I have just mentioned for the clarification. So Nazar 1991, because there may be some other Nazar art house film by someone else, but then directed by Manikal means a very, very specific film he is talking about, is based on a short story called The Meek One. Who is the writer? अब ये सब लोग जो है चेकोव, मुपासा, दोस्तोवस्की, ये सब बड़े नाम है, छोटे मोटे नाम नहीं है. आपने सुना है कि नहीं सुना, एक सेकेंडरी क्वेश्चन है. तो आपको इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वर्क तो पता होना ही चाहिए, बट अगर किसी की कहानी पर कोई पर्टिकुलर फिल्म इंडियन आदमी ने बनाई है, चेकोव की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा थिएटर के ऊपर भी बात की जाएगी. जैसे सीगल नाम का एक प्ले अभी जो है नेशनल क्लब ड्रामा में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई चेकोव का प्ले है वो, और एक इंपॉर्टेंट प्ले. तो बहुत सारे चेकोव के प्ले हैं, करीब 10 के करीब जो इंपॉर्टेंट प्ले हैं. कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो वेल नोन शायद ना भी हो. अब ये मीक वन अगर आपने नहीं भी सुना, मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर मणिकौल ने नजर बनाई, और वो भी एक एफटीआई का आदमी. तो
That's why this story may not be considered as a great story by Dostoevsky. I'm using a word may not be, but perhaps those people who have a keen interest in the literature would be knowing about it. So I'll just show you some of the images. Particularly, I have a poster of this film. So this is a very interesting poster to me. This is the hand, and it is a this girl's hand is, you can figure it out, is a girl's hand. This is a daughter of Manikal who acted in this film. So this is how he looks like, and this is the writer. So इस टाइप से कुछ एक जगह मैंने explanation लिखा हुआ है, but most of the MCQ don't need any explanation. It's just a objective information, and that's it. As simple as that. Now, as I said, that some of these names, particularly if it happened to be a regional filmmaker, regional, when I'm using a word regional, it means every state is a regional state, which has a particular language, and that's why you may not be familiar with the cinema of that language until unless you are a part of that language. Suppose, for example, Odisha, जब अभी कुछ टाइम बाद एक उड़ीसा का फिल्ममेकर की बात की जाएगी, उस आदमी ने बहुत फिल्में नहीं बनाई, कुछ 2-3 फिल्में ही बनाई हैं, बट उसमें से एक फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वो एफटीआई का ग्रेजुएट, एफटीआई के ग्रेजुएट जो 70s के अंदर पास आउट हुए, उन्होंने उस टाइम में आर्ट हाउस फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल होता था. आज के टाइम में फिर भी आसान है क्योंकि डिजिटल कैमरास आर देयर. You can still make a film in 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh. In those days, if you don't have enough money to buy a raw stock and motion picture camera and all that, it used to be an expensive affair at that point of a time. अगर कोई आदमी बोले उस टाइम में मैंने 2 लाख में फिल्म बना दी, तो उस जमाने का 2 लाख जो है आज के 2 करोड़ के बराबर. That is what you need to equivalent. You have to think in those terms. So G. Arvindan is one of the important. Okay, now let me just move a little bit down. So G. Arvindan is, if 5 art house filmmaker from Kerala would be chosen by anyone who is an art house fan, Arvindan's name would be one of them. His films are little narrow focused. His films are narrow focused, and not everybody liked those films. When we were the student in FTI, many people would walk out of his films screening because they are very slow. Sometimes they are boring. Sometimes they doesn't have an action. But after saying all that, it is still important as a filmmaker to study people whom you may not like it. There are many filmmakers whom I don't like personally, but I have seen those films. And when you watch these variety of film by variety of director, you need to find your focus. That this is what appeals to me. I may not like Arvindan's film, but he has all the rights to exist. And in those days, making a film was very, very difficult. And he did contribute to a certain kind of work the way he was. So certain people have their own particular style of filmmaking, whether you like, for example, Bresson, Robert Bresson. There are 2 Bresson. One is Henri Cartier-Bresson, who's a photographer, photojournalist from France. And this Bresson I'm talking about is a filmmaker. His films are very simple, minimalist films. And many people consider him as a important filmmaker from France. Whenever the top 100 filmmakers of history of French cinema, if you will study 100 names, if you would study, Bresson's name would be there for sure. Maybe 1 film, 2 film, 3 film, depend upon the liking of the person who's making a list. So as I said, that Arvindan is one of those top 5 filmmaker from what do you call Kerala, and he has made around 7-8 films in his lifetime, which is very, very important. So this question which I have formulated here is from a real experience of FTI entrance exam paper, question paper. Many, almost like I would say 7-8 years back probably, when these question paper were not loaded on the website at that point. I remember there was a question on the synopsis of another important filmmaker called Adur Gopalakrishna. So they mentioned the synopsis of that film and said, who is the
director of this film, or from which film, who directed this film, which has this. So I was a little surprised, because if you are not familiar with the synopsis of the Adur Gopalakrishnan's film, you will not be able to answer. So that was a difficult question to my mind. And from there, I got the clue that, okay, people can formulate a question on the synopsis of important art house directors' film. So from there, I got this idea, and hence I have formulated some questions to give you a clue that what kind of question can be formulated. So G. Arvindan, which of the following films of G. Arvindan is a Pied Piper-like figment of Malabar's folklore about a partly mythic and partly real magician? अब जिसने फिल्म का कुछ थोड़ा सिनॉप्सिस पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कुछ फिल्म देखी होगी, उसको पता होगा कि अब ये सभी फिल्में हैं, उसकी कोई भी फिल्म हो सकती है. So this is a Kumutti, is a film. Again, it is shown in FTI days. Whenever some of you would go there, they will also get to see this film. Let me see if there is a poster. Okay, Arvindan is look like this, and this is a very, very bad poster I could find from somewhere. God knows. I'm not sure whether it's correct because it's written in Malayalam. Somebody downloaded. This particular year, Cannes Film Festival honored the India for reason best known to them, for under some theory, and they restored certain films. And I also told you last time also, one particular film of Arvindan was also restored. Some of you who were really keen or were listening to me would have definitely find the name of that film. So here again, the Kumutti is the film. So please read the synopsis of various important 7-8 films. He has not done the 100 films. So 8-10 films which he has made, kindly read those synopsis. And another filmmaker which later on independently became filmmaker was his cinematographer. What was his name? Shaji and Karun. Shaji and Karun shot most of his work, and he became independent director later on, and we will talk about Shaji's work also. Shaji is the only filmmaker film this country whose last film was into the Cannes Film Festival competitive section. A very, very important question. If I would formulate a question paper, which I would never formulate, I would keep this question, which is the last film from India which was in the competitive section of the Cannes. It was Shaji and Karun's film. Okay, so Kumutti we have already talked about. Uttarayanam, directed by G. Arvindan, is inspired. Now, this is a little tricky question. When I was reading about Arvindan, I found this information, and then I formulated this question, which is really tricky, because if you do not know this, then you will not be able to answer. Because I have given all confusing alternatives. Until you can't just use the hit and trial method. So this is my kind of confusion somebody can create for you. So be very, very sure which is small and which is big. Both is possible. Little world, small people. Little world, little people. Big world, small people. Small world, big people. So all these could be a possibilities. Until unless you really carefully remember the name, it is not going to happen. So this was a series of cartoon which was published in this journal, this newspaper or magazine. I'm not sure whether it's a Mathrubhumi is supposed to be a newspaper. For several years, which was the title of the series. It is a small world and big people. Today morning, I again checked it because somebody pointed out to me that from their, that, what do you call, encyclopedia, Wikipedia, that earlier it was a, so sometime whenever you have a doubt and if you feel that no, this could not be answered, you can just Google it and you can easily find it. But you should know what to Google. So let me just see if there is an image from this, no. I'm not sure whether it's a correct image, but this is again some Malayalam film they have used, because God knows why. Okay, so this is a small series you need to find. If you can, those people who are from Kerala probably would be able to find some cartoon series from there. So which of the following films of G. Arvindan aims at exposing opportunism and hypocrisy set against the backdrop of the independence struggle? Again, as I said, that you really need to understand which are the
what exactly is the synopsis and those films. So again, it's the same film which I have mentioned over there. Ram. Poster, I'm not sure whether it's the correct poster because the regional films, somebody I asked them, so they have just put something over here. So please don't bank upon these regional names. Just try to find your own. Remember the synopsis. That will be much more easier. Sometimes it's a good idea to find a cast because you might find the Mohanlal or those kind of people acting over there. Mohanlal is not that popular a actor in the Hindi belt, but at least I would say people knows about him. If you have some idea about big stars from the Kerala industry, he is one of them. So again, Uttarayanam, and then which of the following is the debut film? Now this is some few years back there was another question of a art house filmmaker, which of his film was a debut film. So I thought that Arvindan's debut film also could be asked because we are formulating a question. So it's the same question. Uttarayanam. So which of the following films of G. Arvindan blends together the biblical story of the deeds of Christ and the way society responds to him with the life of fisherman whose life mystifies other. So Sthapan is the name. If I'm not sure, again the poster image would be correct. Just Arvindan's image is there. Those people who can read the Malayalam can find out if it is a correct name or not. Stop. Is it a correct name? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. So maybe also you can do some exercise. All these people, rest of the people, check with your friends from the Kerala and probably they can help you out to find out the correct poster because I took help of someone, but since I can't read it properly, so I bank upon whatever they gave me, I put it over here. So there is quite a possibility that it may not be correct image, but at least the text is correct. And text would be asked, not this regional language, any stuff like that would be asked. So again, the as I said that knowing the some film stars of the regional industry is important for you people because they have done substantial amount of work and some of their films are also being, I would say, made in two languages, Hindi language or if it become a little popular in their regional language, then they have also done that into Hindi also, but not so many film, I would say. So this is question number 8. Chidambaram, directed by G. Arvindan, is based on a short story of the same name. Who is the author? Now this is a tricky name because may not be that big a name from the regional industry. So, but as I said that it is Arvindan's film. So you have to remember certain films which are based on short. It is as simple or as difficult that if they can ask the Satish Ray's novel based on Sunil Gangopadhyay or someone else, then Sunil Gangopadhyay may not be familiar to someone who is from Kerala or Assam or somewhere else. But yes, in West Bengal, if you don't know Sunil Gangopadhyay, then probably you have nothing to do with the Bengali literature. As simple as that. So these are the, you may not have, I have not read many of his short stories and novels because I am not from West Bengal, but at least I know about the work which he has done. And particularly because if you Satyendra Ray picks up someone, it means that person must be having something. Otherwise, it doesn't happen just like that. Ray will not pick up any Tom, Dick and Harry. Ray's most of the work, I would say 75% of the Satyendra Ray's work is based on a short story by someone, obviously, or a novel or short story he has used by other people's work also. So kindly make sure that when you study the Ray's work, one of the important question could be on which novel or short story it is based and who is the author. So here it is C.V. Sriraman, may not be a big author for those people who knows the Malayalam literature, but but again, the fact remains so. So question number 9. So which of the following films by G. Arvindan
narrates the story of a remote village and the incidents pertaining to electrification during the post-independent period of India. अब ये बिजली का मतलब this is an interesting story when we saw this film in FTI days, and I would say one of the interesting film of Arvindan, which is a little gripping and different from others. I still can't pronounce his name correctly, but it is Uridatu, something like that. It doesn't matter whether you can pronounce his name correctly or not, because there the pronunciation audition is not happening. It is not an audition for acting over there. It is just a MCQ question paper. So you need to tick it and computer is going to check. So again, let me see if there is an image from the film. Not sure, is it the correct image, guys? People who can read the Malayalam? Yes, sir. Okay, fine. So there's another film which you should know, because again it is directed by a lady from FTI, graduated lady who directed the short film, not short actually, a featurette kind of a film, When Radio Comes to Rampur. When Radio Comes to, I've forgotten the name of that lady. She directed this film. There's a book recently come out. You should, I don't know whether you would like to spend that much money or not. FTI has come out with a book by Gauri Chakravarti, and she edited that book. And Gauri is a professor at, earlier she was teaching at the MIT University, and now she is teaching in the Times of India University, Bennett and Coleman. So she did a research work funded by FTI itself, just the basic research work, about the work of women directors, editors, cinematographers, sound recordists who graduated from FTI and have done something or other. Somebody got married and just have 4 children. Those people may not be included over there. I mean, there may be a name, but I have not gone through the entire book. But yes, certainly there are chapters devoted for people who have done some work in the field of cinema. So this Radio Comes to Rampur is a very interesting film, that how first time when radio comes over there in a village and how people are celebrating that. It's a very interesting film. If you can find it on the Children Film Society's site or their channel, then you must watch this film. There's another similar kind of a story, which probably if you can find it somewhere, you must read it. The Pinti Ka Sabun. This Pinti Ka Sabun is again, if later on I found that a film was also made on that. It's a story about what happens when in a village, when a soap is somebody find a soap. I mean, one day, first day, somebody would have bought a soap. It's not that they were born with a soap all the time. There was a time when when people discovered that there's something called soap. And so one person wins the soap in a race, and what happens after that? That soap becomes a star, and everybody wanted to take a bath, and if not a bath, but at least touch that soap or smell that. So sometimes people come out with these kind of story. So it just remind me of that. I thought I'll let you know. Pinti Ka Sabun is another story you can read if you can find it somewhere on the net. Okay, so question number 9 is over. Then yeah, please. What was the name of that big book? FTI alumni wala? Alumni का book का एग्जैक्ट नाम मेरे पास वो किताब है, देखना पड़ेगा उसका. अगर आप गौरी चक्रवर्ती के नाम से ढूंढेंगे नेट के ऊपर या एफटीआई की वेबसाइट पे जाके जो पेजेस हैं कहीं ना कहीं उसके इनॉग्रेशन का वो बुक जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है. ये जो क्या होता है तुम्हारा अमेज़न के ऊपर अगर आप जाएंगे, गौरी चक्रवर्ती ने कुछ 50 किताबें नहीं लिखी है, उसने एक ही किताब लिखा है ये तो, बट इट्स अ रियली वर्थ वर्क. सो गौरी चक्रवर्ती आप टाइप करेंगे उसके अंदर, तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा कुछ लोगों को जो लोग पढ़ना चाहेंगे. और आपको थोड़ा देखना चाहिए, पर्टिकुलरली women who are on this discussion here, they must buy that book just to update their knowledge about the women filmmaker of this country who has done substantial amount of work. Something they must have, and little detail are there about those people who have done some substantial work, those who are not done substantial work, but still the listing is also there.
of the FTI graduates I'm talking about, not rest of the people, because it is a Almunai's work. So that's it. So Gauri Chakravarti, you type it, otherwise I'll find the link and send across to you. So that's one. Okay. So which of the following, yeah, hope I answer it. Yes, sir. But and also Martin Scorsese put a post about Kumati very recently. Yes, yes, yes. They must have done it because, as I said, that some of his work is being restored. So if one film is being restored, some other restoration organization also wakes up. Then some other people would also try to restore. So this restoration is another new thing. Old films which are important are being restored by some company or other. Though it may not have that kind of commercial value, but definitely it is an archival history. Whenever somebody want to study the history, today, why so much of preservation happens of archival thing? Because history is important to study. So is the for cinema history also. We have a National Film Archive of India in Pune, which has restored. Now the only problem is earlier the restoration of the film was restored on a print. Now those film prints are getting obsolete. Everything is getting digital. So it is quite an expensive job to transfer all these film into the digital format. But they are doing it. Government has money and they are doing it. Okay. So black and white film in a direct documentary mode and deals with the roaming street circus of Kerala. Okay, so there are some other films also which are being made into circus. I'm not talking about the Raj Kapoor film which everybody knows, but this Thampu is also an important film. If you just get a chance to watch it, you should watch it for a different reason. I mean, how people could think of this. I mean, circus is a very common subject, but Arvindan did it in a little different way. So that's interesting to observe from how, see, the idea normally, say for example, Titanic. Titanic is also made earlier. It's not the first time they made it, but this Titanic is totally different from other people's Titanic. So what is the perspective you pick up by on doing a film on a particular topic? So if the perspective is different, then it becomes a different film. Okay. Again, which of the following films of G. Arvindan stars Mohanlal? As I was talking about earlier, that they can pick up a film where there's a big star over there and they can ask a name of the star sometime. There's another way of formulating the same question. This is a one way. Arvindan stars Mohanlal. They have told you the name of the Mohanlal, and now they're asking the film of the name of the film. So it is a Chidambaram, and let me see if the poster is also here and it's a correct poster, because that is always a risk. So Mohanlal is correct, but this poster I'm not sure is the same correct poster or not. At least something is written in Malayalam. So is it the correct poster? Correct, correct. Okay, okay. So fortunately, it is good, correct one. Old films posters are difficult to find. There's a website, write down the name of this website called IMP Awards. Important award. IMP Awards. AWARD. This is a site, if you really wanted to download the high resolution poster of international films and to some extent the recent Indian films, you can easily find the what do you call download. You can download the high resolution films from there. Just give me a moment. Just give me a moment. Okay, guys, I'm sorry.
I have to just check this peon guy. Okay, so as I said that they can pick up a film and then they can ask the name of the star of the film. Now imagine if you are not familiar with this kind of question which I am talking about, you will not be able to answer it. And as I said that in the past, I have seen from my own eyes one question dealing with the synopsis of the film of Adur Gopalakrishnan, and that was really tricky question until unless you have not seen the film. Adur is another popular filmmaker. Popular means art house filmmaker from Kerala. So, okay, so we were at the question number 12. So, which of the film following is a film by G. Arvindan and deals with the theme of, ये हम लोगों ने discuss कर लिया. So, theme of migration and displacement. No, this we have not. So Vastuhara is the film. Yeah, it is here. So Vastuhara is a film, and if there is a poster, then I will just tell you. Yeah, is it the correct poster? Okay, it is written in English also, so it's easy. I suppose this another actress is also known to some extent in the Hindi films also. I don't remember the name exactly by her, but she has done a couple of Hindi films also. Shobana. Yeah. Shobana. Yeah, Shobana. I think she is also a dancer of a classical dance form, probably Bharatanatyam, not sure. Okay, Damul is a very important film in the history of Indian cinema because those were the days when the film were made on the black and white, and black and white films were made on those days, and Prakash Jha directed this film called Damul. So poster I'm not sure whether it's here or not, but yeah, it's here, and you could see that how this black and white and color is being used very interestingly. This film was premiered on the Doordarshan. I remember I was a kid at that time and I saw this film on the Doordarshan. So this became a kind of very well known film in those days, discussed in the various film festivals, various journals, art house magazines and all that. So Damul, Prakash Jha का अगर कोई सबसे important काम है तो वो दामुल है, और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी है किसी की पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा कैटेगरी था, हो सकता है डेब्यू फिल्म का अवार्ड हो या कुछ और हो, बट दैट वाज द फर्स्ट फिल्म बाय दामुल. और this could be asked on that. Okay, now as I said that there are filmmakers who has made only one film or two films and not so many films, and they are very, but sometimes it can happen that even the one film which somebody has made it would be a cult film or a masterpiece or become important in a regional cinema. So Neeraj Mahapatra is again a graduate from FTI 74 or 75 batch, and this is a film called Maya Mrigya. I'm not sure whether I found the, yeah, okay. Those people, anybody from Odisha here? Okay. So this is a Odia language film to my mind, and since I have not seen, so I can't say with the surety, but this is a poster which I could find. So Neeraj Mahapatra, Maya Mrigya is one of the important film in the history of Odia cinema, and that's it. Then again, there are some other filmmakers who worked into some other regional industry. Punjab has grown now, but in those days, earlier days of 75 and 80s, Punjabi cinema was not that big. Only very occasionally you will get to see some, hear some film. So Marida Diva is a film directed by, again, we will talk about this Professor Surinder Singh. He was teaching at that time also when I was a student in the for direction department for a few years only, not for so many years. And this film funded by National Film Development called NFDC, and the novelist name is important because it is based on a novel. So Gurdayal Singh may not be a big name in Punjabi literature, but at least this novel was based on his work. So, and the name is also Punjabi. If you
Marida Diva, those people who understand a little bit of language, they can understand the name. So let me see if there is a poster. And Raj Babbar acted in this film, so it is an important film from that point of view. This is the English translation, the last flicker. Diva stand for that small thing with a flame. So this is the author, and this is the poster. Poster is not very exciting, but because it is a Raj Babbar, so in those days, even to cast him in some way or other, it was important because people knew him. He's the only star National School of Drama has produced. NSD, rest of the people are character artists, I would say. But one star which NSD has produced is Raj Babbar. So this is a poster which I have shown you. And we had discussed the name of the author, Gurdayal Singh. Now we will, I've already told you that is the Professor Surinder Singh, who was the teacher at that time in 1991, 92 when I was a student there. So he is the director of that film. He has made two, three more films also, but this is a film which is worth remembering. Okay. So now we are coming to another film. Who directed Anne Gode Da Daan? Now this is again a Punjabi name, but why this film is important? Because among recent graduate, Gurvinder Singh is a person who is working in a Punjabi language. So he has directed 4 or 5 films. And this is a film which is most talked about work of his. And let me just show you if there is a poster here. Now this is one of the posters. So you can see all unknown people, basically village people you can see. And you can see these all tops, icons up there, which are, so this is how he look like. So among the recent graduates, I would say, is one of the film. This particular film was also selected in the Cannes Film Festival into some section. There are 4 or 5 sections. Don't be confused. When we'll talk about the Cannes, we will discuss about various film and which film was in which section. So all those 40, 50 names, you have to mug it up because the question can be asked in which particular section the film was selected. That's the only thing they can ask, and maybe the award if it has won. But very few film has won the award in a Cannes Film Festival. So that's it. Okay, we'll move to another one. Now, as I said earlier, that Kumar Shani is another important art house filmmaker. Most of the time, people remember him along with the what do you call Manikal. So Kasba is a film which has some well-known faces like Shatrughan Sinha. Shatrughan Sinha. Again, you will say, how come Shatrughan Sinha landed up over there in an art house film like this? But sometimes these things are very strange and you might find it a little odd also. Like, for example, there is a Bengali film in which Shatrughan Sinha has acted. Now, let me check how deeply you are into art house cinema. Which is the name of the film in which Shatrughan Sinha has acted in a Bengali film? Anybody here? 48 people are there. Very simple question. If you know it, if you don't know it, then not. Gautam Ghosh, Antarjali Yatra. Gautam Ghosh, Antarjali Yatra. If you ask me, Shatrughan Sinha has ever acted in his life, it is that only film. Rest of the film I don't consider are the great film. Antarjali Yatra, he did a wonderful job. Wonderful means really, really wonderful. If you get a chance to watch that film directed by Gautam Ghosh, you must watch it. Early morning, 6 o'clock, 5 o'clock, sequences near the beach. It's very difficult to shoot with people like him. If I was just listening some discussion where Bachchan was telling that it was too difficult. Wait for him all the time, he will be late. But anyway, so coming to the point, Kasba. The Indian drama film Kasba is based on a short story, The Ravine, by Anton Chekhov. Who is the director? So I have told you that this is a one way of asking the question, and another way is after this is there. So Indian drama film is the Kumar Shani, which I have already told you. So this is a poster also. Immediately you can see over there.
And another way to ask this is Kumar Shani's Kasbah is based on a short story by Anton Chekhov. This is it. So sometime you need to remember all these names, and if you know the exact name, then you will be easily able to answer it. So in the Ravine padho, kuch bhi padho, koi farak nahi padta hai. As I said, you should remember the name of the story. That's it. So now it's 9 o'clock. We'll take a little break because I have some problem here in my throat today. So instead of 10 minutes, we will take a 30-minute break, and then we will extend another 1 hour because when we started 8 o'clock, so 2 hours is the commitment. So we'll break for 30 minutes, and you can have your breakfast, those people who could not do in early morning, and be here at 9:30, and we will extend till 10:30 the class. Okay, guys? Anybody who wanted to ask a question, quickly ask. Fine. So I'm just pausing right now, and then we will again start. Just give me a moment. Okay. So on and off, I keep saying few things about some note down. Keep a pen and paper ready so that if I ask you something to note down, do note down, because all of a sudden when I'm reading something, I can recollect. Not always, but okay. So we had finished till Kasbah. Kasbah, as I said, that this is one of the important film of Kumar Shani, and those all that we have already discussed. Meeta Vasist is a graduate from National Institute of Drama, and she has worked with a certain number of films with the Manikal. Say, for example, Siddheshwari Devi is another film by Manikal, which is important because it is based on this classical singer, where Meeta played the role of that classical singer, Siddheshwari. So it becomes important from that point of view. So now the question over here is, Kasbah, directed by Kumar Shani, is based on a short story. Who is the author? So we already have discussed that. Now I'll move to another thing. So images are missing at some points, but it's okay because certain films images are not easily available. So which among the following statement is false about Kumar Shani? As I said, that MCQ, some of the MCQs are also suitable to become MSQ. Why? Because there could be a two alternative instead of one. You could just change the same question into MSQ also. Say, for example, in this one, feature film Maya Darpan is based on the story of Nirmal Verma. So this is true. Okay. So if those people, Nirmal Verma is one of the important authors in Hindi literature, and otherwise also, if you wanted to prepare some question on the based on Hindi literature, though we will be covering some of them, but you also need to study of his work. Any of these stories, some of his stories are also used by filmmakers on and off, not always, but mainly in the art house cinema. Bhavan Tarana is a documentary film on Odissi dance form. Yes. Shatrughan Sinha acted in a Kasbah. Yes. Meeta Vasist acted in a film called Tarang. No. Meeta Vasist did not act in the film called Tarang. So that's why I said that synopsis as well as the lead actor and actresses. So rest of the fact I have put it over there. Now, if I want to convert this question into a MSQ, for example, so I can easily convert feature film Maya Darpan is based on the story of, say, for example, Mohan Rakesh. So it becomes false. So A become false, D become false. So it will become a MSQ. So those people who are asking me, sir, hum log MSQ kaise prepare kare? There is no special technique required to prepare that. Whenever you are preparing a question like this, now this question can be asked in a direction course, and the same question can also be asked for the acting course. Why? Because I would change I would formulate another question over here, because there are two actors here. Shatrughan Sinha I am talking about, and I am talking about the Meeta Vasist also. So this becomes MSQ for acting. Shatrughan Sinha is a graduate from FTI Pune.
and that's why he is important. Even if he has done the very ordinary, mundane, run-of-the-mill, typical masala film in the Bollywood, but as I said just now, occasionally he also has acted and done a good job. Antarjali Yatra by Gautam Ghosh, Shatrughan Sinha has done a wonderful job. So same question could also become a screenplay writing MSQ. For example, if somebody is writing a paper for a screenplay writing, feature film Maya Darpan is based on the story of Nirmal Verma. दूसरा मैंने उसका कुमार शानी का कोई फिल्म उठा लिया, मान लीजिए मैंने भवन तराना इज बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय फलाना टिमका, वो तो बेस्ड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट्री है, सो इट बिकम्स फॉल्स. सो गुरु केलू चरण महापात्रा, जिन लोगों ने थोड़ा डांस वांस पढ़ना चालू कर दिया है, एमसीक्यू ओडीसी के अंदर जो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है वो केलू चरण महापात्रा माना जाता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है भवन तराना, जो कुमार शानी ने डायरेक्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के लिए. तो this is the way the same question can also be formulated about the in MSQ. MCQ, so far it is a MCQ, but if the two things are there, then it becomes a MSQ. Hanji. Which among the following statement is false about Kumar Shahani? He directed the film Maya Darpan, yes. He directed the feature film 4 अध्याय, yes. 4 अध्याय किसकी स्टोरी पे बेस्ड है बताइए? 46 लोग यहां पर सुन रहे हैं, 4 अध्याय किसकी स्टोरी पे बेस्ड है? ये मैंने नहीं लिखा है, तो ये काम तुमको भी करना है. ऐसा नहीं कि मैंने यहां जो बोल दिया दैट इज अल्टीमेट एंड फाइनल एंड एग्जॉस्टिव. नो, जो लोग बाद में खुद भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे वही उन्हीं लोगों का कुछ होगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको शायद नहीं बताऊंगा. जब मैंने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया था तो मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई थी कि 4 अध्याय किसकी स्टोरी पे बेस्ड. दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग हियर. जिन लोगों ने 1000 रुपए खर्च करके घर में सो रहे हैं, अपना इनको आगे पीछे कर रहे हैं, फैक्ट तो पता लग जाएगा, बट बहुत सी चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो आपको until unless you hear the commentary you will not be able to do it. So that could be a part of the MSQ. He directed the feature film Kasba, yes. His one of the feature film is based on the Dostoevsky story in the Ravine. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है. तो ये आंसर क्या हुआ इसके अंदर? गलत कौन सा आंसर हुआ? B. So it is just a matter of creating a confusion. If your factual information is correct, whatever the permutation and combination direct question paper decided to formulate, it's not a big deal. And remember, MCQ और MSQ के अंदर more than enough time मिलता है. More than enough का मतलब क्या होता है हिंदी में? 1.5 घंटा मिलता है आपको MCQ और MSQ करने के लिए. MCQ में 20 क्वेश्चन आते हैं और MSQ के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं. राइट और रॉन्ग? राइट सर. MCQ लास्ट ईयर की बात हो रही है, 1857 की बात नहीं हो रही. लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हो चुका है. जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ. MCQ 20 मार्क्स का होता है और MSQ 30 मार्क्स का होता है. यस सर. और 15 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. अगर आप एक्टिंग के लिए जा रहे हैं तो एक्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. आप सिनेमाटोग्राफी से में पढ़ने जा रहे हैं तो सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा. डायरेक्शन में डायरेक्शन, एडिटिंग में एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग में साउंड रिकॉर्डिंग. जो लोग अभी भी सो रहे हैं कृपया जाकर FTI की वेबसाइट पे जाके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर गलती से उन्होंने लोड कर दिए हैं. निकम्मे लोग हैं वो लोग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने में. लास्ट ईयर MCQ उनका जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का, अनाउंसमेंट करने के बाद, जेट एंट्रेंस एग्जाम की अनाउंसमेंट करने के 7 दिन बाद उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर लोड किया था. So at least you people are fortunate that they have loaded the question paper, so you know what could be the pattern of MSQ. MSQ थोड़ा ट्रिकी है. ट्रिकी इसलिए कि पहली बार हुआ लास्ट टाइम तो लोगों को समझ ही नहीं आया कैसे होगा. बट जिसका प्रिपरेशन ठीक था, जिसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ठीक था, they could qualify for the second round. सेकेंड राउंड में उन्हीं लोगों का पेपर चेक होगा. अभी तक का रूल है आज की तारीख तक, जब तक वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, और मुझे नहीं लगता कि रूल चेंज होने वाला है अभी. जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे एज पर द रेशो, ओनली पेपर बी विच इज ए डिस्क्रिप्टिव वुड बी चेक्ड, अदरवाइज इट विल नॉट बी चेक्ड. अगर 6000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो आराम से अपना चाय पीते हुए 2000 लोगों के पेपर चेक करेंगे. तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस हम लोग बात कर रहे हैं इसी में से MSQ क्वेश्चन निकल सकता है. इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं जिसके अंदर
आपने वो इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बात करेंगे, अब वही क्वेश्चन एमएसक्यू कैसे बन जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अरुण खोपकर। अगर तुमने जिंदगी में अरुण खोपकर का नाम ही आज सुना है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको नाम जो है पहले से ही सुनना पड़ेगा। अरुण खोपकर इज ग्रेजुएट फ्रॉम एफटीआई पुणे, mainly he is a documentary filmmaker of art, culture, etc. He has done a film on the dance, he has done a film on the painter, he has also made a feature film which we, on the basis of which I have formulated this question. सर एक मिनट सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं क्या बोला, हम जैसे कि हम डायरेक्शन कोर्स कर रहे हैं तो एमसीक्यू जो एमएसक्यू आएगा वो डायरेक्शन के ऊपर आएगा या सिनेमाटोग्राफर का आ सकता है, एडिटिंग के ऊपर आ सकता है? एमएसक्यू सिनेमाटोग्राफर के ऊपर तो नहीं आएगा आपके लिए, वो केवल सिनेमाटोग्राफी वालों के लिए आएगा। अब मूर्खता की हद होती है, आप जाके साउंड रिकॉर्डिंग का पेपर चेक करिए। एमएसक्यू इतने मूर्ख क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तुम्हारा मैं चाचा हूं, मेरी एक डॉटर है, वो ताऊ जी की लड़की को क्या रिलेशन। सच काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द साउंड रिकॉर्डिंग पेपर। एमएसक्यू देखो जाके, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक, छोटा छोटा इक्वेशन, 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जिसको ने थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा होगा वो आदमी कर सकता है। तो साउंड रिकॉर्डिंग के सारे क्वेश्चन ढंग के क्वेश्चन नहीं थे। सम कचरा वाज देयर as I just mentioned to you, and there are some other kachra question, but in editing they were relevant question comparatively. computers related question थे, software से related question थे, cinematography में टक्कर के question थे, acting में भी ठीक ठाक ही question थे, हालांकि कुछ एक question again I would say not really related to the acting, but indirectly they were related to the cinema. डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टर के जो डायरेक्टर से रिलेटेड कोर्स है, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, दिलीप कुमार पे आएंगे हम लोग, और वो है तो एक्टर बेसिकली, बट वो एक्टर को अगर मैंने डायरेक्टर से जोड़ दिया तो डायरेक्शन का कोर्स हो गया। मान लीजिए अभी जब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे दिलीप कुमार का, तो दिलीप कुमार ने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया तुम्हें पता होना चाहिए। दिलीप कुमार की इंपॉर्टेंट, ये मैं इसलिए दिलीप कुमार की बात कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर दिलीप कुमार पास्ड अवे। तो जब दिलीप कुमार पास्ड अवे, इट बिकम्स an important question for general knowledge. Anybody who passes away becomes important. जैसे इस साल गोदार्ड is no more, right? So there would be a question on Godard. There should be, I would say should be. अगर मैं पेपर बनाऊं, जो कि मैं कभी बनाऊंगा नहीं, बट कोई भी समझदार आदमी क्वेश्चन बनाएगा तो गोदार्ड से कनेक्टेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वो हम बात करेंगे बाद में कभी, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं गोदार्ड से, और कितना किसकी दिमाग में खोपड़ी में घूम क्या रहा है कि कितना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनाना है, बनाओ। क्या बना सकते हो तुम, क्या सोच सकते हो, वो मुझे पता है। उन लोगों की खोपड़ी में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वो मुझे पता है, एंड आई कैन फॉर्मुलेट मच बेटर एंड मच डिफिकल्ट क्वेश्चन देन दोस पीपल कैन। एंड इन द पास्ट इट हैज हैपेंड, दे पिक्ड अप द क्वेश्चन फ्रॉम माय बुक व्हिच वाज पब्लिश्ड अर्लियर, एंड द क्वेश्चन केम लेटर ऑन। क्वेश्चन वाज who among the following was a cinematographer and later become director. They piggy ride over the idea, they formulated a question, who among the was the editor and later become the director. कॉपी नहीं किया, बट आइडिया तो मेरे क्वेश्चन से आया। Are you getting my point? So not necessarily exactly the way I have formulated the question would be asked, but उससे मिलता जुलता ऐसा कुछ जो है आ सकता है। तो ये जो यहाँ पे बात हो रही है वो आपको वहीं तक सीमित नहीं रहना है। जैसे मैंने 4 अध्याय की बात की, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि किसकी स्टोरी पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो सर फोड़ेगा 1 घंटे बाद वो आदमी घुसेगा वहां पे। खुद भी सर फोड़ो, आधा काम मैं करूंगा, आधा काम तुम करो। बता सकता हूं मैं, पता है मुझे, बट मैं चाहता हूं कि तुम भी घर पे जाके थोड़ा सर खपाओ थोड़ा सा, और अगर नहीं खपाओगे तो कुछ नहीं होगा। पेपर तुमने देना है, नरेश शर्मा ने पेपर नहीं देना, ध्यान रखना। सो क्वेश्चन कैन बी, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दीज पीपल। तुम्हें जिंदगी में अगर तुम यहां पर नहीं सुन रहे हो तो अरुण खोपकर कौन है तुम्हें नहीं पता, मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर नॉट सेलिब्रिटी, these are FTI graduate who has done certain kind of documentaries. अब अरुण खोपकर के ऊपर कभी भी यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे देता हूं मैं, क्योंकि यूपीएससी वाले को अरुण खोपकर से कोई लेना देना नहीं, बट एफटीआई वालों को तो लेना देना है। आधे लोग तो उनके वहां दिवाली देख रहे हैं घर में बैठ के, उन्होंने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, तो जिसने भी कुछ किया है he becomes important. So he has done documentaries which are shot on 35mm format in those days, which was almost impossible to shoot a documentary on 35mm. 16mm पे डॉक्यूमेंट्री शूट होती है, क्यों? क्योंकि रॉ स्टॉक जो है सस्ता होता है।
आपको बहुत फुटेज शूट करनी पड़ती है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। एक आदमी का अगर 30 मिनट इंटरव्यू अगर आपको 35 पे लेना पड़ेगा तो बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। That's why documentaries are shot on 60 minutes. But all these films, संचारी जो है 35 पे शूट किया है पीयूष शाह ने, फिगर ऑफ थॉट पीयूष शाह ने शूट किया है 35 पे, कलर ऑफ एब्सेंस 35 पे शूट किया है पीयूष शाह ने, बिकॉज दे वर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो वो बजट इतना था कि 35 पे शूट कर लिया जाए, और उस टाइप का डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि उसमें 10 मिनट का इंटरव्यू लेना पड़ेगा किसी का, उसमें से जाके तुम 1 मिनट का, ये इंटरव्यू बेस्ड फिल्में नहीं है। जब आप इन फिल्मों को अगर कभी देख पाओ तो इसमें आपको पता लगेगा ये इंटरव्यू बेस्ड फिल्म नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है? अनिल ने हाथ उठाया है। Sir, is it 4 अध्याय based on Rabindranath Tagore's last novel, right? अब देखो, मुझे मत बताओ, मैंने एक I'm आधा asking काम sir, कर दिया, अब ये लोगों का टाइम बर्बाद मत करो, तो खुद भी थोड़ा देख लो, गूगल में आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन वो confirm पूछो, कर रहा हूँ। क्वेश्चन वो पूछो जो आपको गूगल में नहीं मिलेगा। Sir, confirm कर रहा हूँ बस। कंफर्म मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम है यहाँ पे, शार्प 10 बजे बंद हो जाएगा, 10:30 बजे। हाँ जी, अरुण कोपकर की बात कर रहे थे हम लोग। तो संचारी जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फिगर ऑफ थॉट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कलर ऑफ एब्सेंस डॉक्यूमेंट्री। अब मैंने क्या नहीं बताया अभी आपको कि संचारी किसके ऊपर है। संचारी जो है डॉक्यूमेंट्री तो है, बट वो है किसके ऊपर, क्या हो रहा है उसके अंदर। तो लीला सैमसन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है वो। लीला सैमसन जिन्होंने, मैंने बोला डांस म्यूजिक फिजिक पढ़ना चालू कर दिया है, उनको पता है कि शी इज ए भरतनाट्यम डांसर। तो संचारी इज ऑन अ डांस फॉर्म, फिगर ऑफ थॉट और कलर ऑफ एब्सेंस। कलर ऑफ एब्सेंस एंड फिगर ऑफ थॉट दोनों पेंटर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। थोड़ा जाके रिसर्च करो तो पता लगेगा कौन सा पेंटर है किसमें और क्या वो है। He did not directed a film called हाथी का अंडा। This is false। क्यों? क्योंकि हाथी का अंडा जो है चिल्ड्रन फिल्म है जो उसने डायरेक्ट की है, तो फॉल्स क्या हो गया, डी। बट इसी में से एमएसक्यू बन सकता है डायरेक्शन वाले के लिए भी, क्योंकि डायरेक्टर की बात हो रही है, तो डायरेक्शन का एमएसक्यू बन जाएगा इसके अंदर। अगर ही डायरेक्टेड फिल्म की जगह मैंने लिख दिया which among the following statement is false about Arun Kopkar, he did not directed a film called संचारी, तो वो गलत हो गया। So then there will be 2 wrong answers and then it becomes a MSQ for a direction course। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो MSQ कोई अलग से ऐसा जीव जंतु नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए तुम्हें हिमालय पर्वत पे जाना पड़े। वो MCQ की ही छोटी बहन है या बड़ी बहन है, जिसमें एक से ज्यादा 2 क्वेश्चन उस डोमेन से रिलेटेड हो सकते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। और वो मैं, अगर तुम मुझसे ऑनेस्टली पूछो, वो एक अलग बात है कि मैंने केस फाइल किया था, बट अगर तुम मुझसे पूछो तो MSQ का 30 मार्क्स एलोकेट करना इज मच बेटर देन अर्लियर सिस्टम वेयर दे एलोकेटेड द 30 मार्क्स टू जीके एंड करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि ऊट पटांग जीके कुछ भी हो सकती है। कम से कम इसमें सिनेमा से कनेक्टेड तो पूछोगे, इसमें एक्टिंग फैक्टिंग से कनेक्टेड कुछ पूछोगे, कुछ भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उससे कनेक्टेड कुछ पूछोगे, कुछ थिएटर से कनेक्टेड पूछ लोगे, एक्टर से कनेक्टेड, फिर भी कन्फाइंड है किसी हद तक। बट जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर है तो कहीं से चालू होती है, कहीं खत्म होती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात MCQ के बाद MSQ का जो 30 मार्क्स है, अगर तुमने ठीक से प्रिपेयर किया है जिंदगी में तो तुम 26 मार्क्स निकाल सकते हो। 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 इज अ बिग डील। और अगर तुम्हारे वहां पर 10 मार्क्स भी रह गए, अगर तुम्हारे 20 में से वहां 10 भी रह जाते हैं तो 10 वहां हो गए, 26 यहां हो गए, 36 मार्क्स, तुम्हारा पेपर भी चेक हो जाएगा। सो कंसंट्रेट ऑन MSQ बिकॉज MCQ का डांस म्यूजिक पेंटिंग वाला सेक्शन फिर भी कन्फाइन है, बट वो जीके नाम की जो चीज है उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा आदमी हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर मेघनाथ साहा, जिनको थोड़ा बहुत अकल है, थोड़ा बहुत अता पता है कुछ फिजिक्स के बारे में। डॉक्टर मेघनाथ साहा के नाम पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है कलकत्ता के अंदर। अब मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि उसने इलेक्शन लड़ा होगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली जीता होगा। मजाक नहीं होता इंडिपेंडेंटली जीतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोग कांग्रेस और बीजेपी से नहीं जीत पाते हैं। तो अगर किसी ने क्वेश्चन बना दिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वुन द contested and won the member of parliament election,
तो मेरी खोपड़ी में तो कभी आएगा नहीं कि मेघनाथ शाह था। मैं तो सोचूंगा कि शांति स्वरूप भटनागर रहा होगा या कोई और आदमी रहा होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा रहा होगा, मैं ऐसे सोच सकता हूँ, क्योंकि होमी जहांगीर बाबा इज मच मोर पॉपुलर देन मेघनाथ शाह। तो क्वेश्चन जीके एक बड़ी अजीब चीज है जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है। तो कंसंट्रेट ऑन एमएसक्यू पार्ट, read little bit more about the domain specific thing, and I have already told you this is the way they can formulate the questions. कुछ क्वेश्चंस एक्टिंग के ऊपर मैं बना रहा हूं, एक्टिंग के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा खेल है उसके अंदर थोड़ा, अगर आप एक जगह भी चूक गए तो फंस जाओगे। बट डायरेक्शन इज इजी, सिनेमाटोग्राफर इज इजी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट। बट फॉर एक्टिंग में हालांकि कोई और आदमी पढ़ाएगा वहां पर एक्टिंग, बट वो एमएसक्यू के जो 40-50 क्वेश्चन है वो मैं बना रहा हूँ। वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो, और वो क्या बोलते हैं आपका ये जो नाट्य शास्त्र के ऊपर जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर द एक्टिंग स्टूडेंट। तो ये हो गया, हाथी का अंडा आ गया इसमें। ओके, वी आर मूव फर्दर। करमचंद, अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया है ये तुम समझ लो थोड़ा सा। करमचंद इज एन इंडियन डिटेक्टिव टीवी सीरियल टेलीकास्ट इन द 1980s। अगर आप अपने पापा से पूछोगे या मम्मी से पूछोगे कि आपने करमचंद देखा है, तो बोलेंगे हाँ हमने देखा है। Which among the following is false about it? अब ये करमचंद के बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई, किसी और चीज के बारे में पूछ लो, ऊट पटांग के 50 और सीरियल बने हैं। बट करमचंद इज डायरेक्टेड बाय पंकज पराशर, एंड पंकज पराशर इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम एफटीआई पुणे, दैट्स व्हाई करमचंद बिकम इम्पोर्टेंट। और करमचंद का एक स्टाइलिंग था, शूट का स्टाइलिंग, शूटिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं, वो हिंदुस्तान में किसी टीवी सीरियल में नहीं हुआ एक्सेप्ट करमचंद। क्यों? क्योंकि उसमें कैमरा जो है हैंडेड होता था और उसको कैमरे को ऐसे फुटबॉल की तरह यूज करते थे। मैंने कैमरा फेंका और तुमने कैमरा लपक लिया गेंद की तरह, ऐसे कैमरा इस्तेमाल हुआ उस फिल्म में। सो दैट्स व्हाई करमचंद बिकम इंपॉर्टेंट। और ये खास तौर पे जो ये 1 ईयर वाले लोग जो है, 1 साल का जो भरेंगे डायरेक्शन या 1 साल का जो कुछ और भरेंगे को पेपर, सिनेमाटोग्राफी में पूछा जा सकता है क्योंकि कौन था इसका कैमरामैन, वो भी एफटीआई का। अब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी प्रॉब्लम। एफटीआई ये मान के चलता है कि तुम्हें एफटीआई ग्रेजुएट्स लोगों के बारे में पता होना चाहिए, जिसने भी जिंदगी में कुछ किया है। फिल्म डिवीजन में नौकरी किया उसको तुम भूल जाओ, बाकी अगर कोई दूसरा आदमी है जिसने नौकरियां नहीं की अपनी जिंदगी में, नौकरी करने वाला आदमी कुछ नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। अगर तुमने कहीं फिल्म डिवीजन ज्वाइन कर लिया, दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो करमचंद इज अ सीरियल which is shot by Sunil Sharma, and that's why it is important. Karamchand is a serial directed by Pankaj Parashar, that's why it is important. Pankaj Kapoor plays the role of a detective, yes. Sushmita Mukherjee played the role of a kitty, yes. It is shot by DOP Ashok Mehta, no. It is not shot by Ashok Mehta, it is shot by Sunil Sharma. तो ये सिनेमेटोग्राफी के लिए भी आ सकता है, एक्टिंग वालों के लिए भी आ सकता है। मैंने पंकज कपूर और सुष्मिता मुखर्जी का नाम दिया हुआ है। पूछा जा सकता है पंकज कपूर की जगह कुछ और पंकज क्या बोलते हैं, रंजीत कपूर डाल दोगे यहाँ पे या रजत कपूर डाल दोगे, तो गलत आंसर हो गया। तो MCQ converted in MSQ is very simple. You have to have a 6 to 7 factual information correct in your mind. That's it. That's the way it is. Okay. So एक घर, ये एक घर जो है ये इंपॉर्टेंट फिल्म क्यों है मैं बताऊंगा थोड़ा भी। एक घर, वन हाउस इन इज ए 1991 इंडियन हिंदी साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय गिरीश कासरवल्ली। जिन लोगों को गिरीश कासरवल्ली नहीं पता, उनको जो कर्नाटका का सिनेमा है उसके बारे में बड़ा लिमिटेड नॉलेज। इज वन ऑफ द लीडिंग आर्ट हाउस डायरेक्टर, और जितनी भी इसकी फिल्में हैं उसको कोई ना कोई एक आधा अवार्ड कुछ ना कुछ होता है लास्ट टाइम, और ही विल बी इन अ जूरी और सिलेक्शन कमेटी और समथिंग। He has not done so many films, 6-7 films mainly, but all his films has his importance. He's a very knowledgeable man, a very knowledgeable man. He came to the National School of Drama in the series of some master class or something, and I attended that lecture. And he talked about the cinematography, which I never thought that he will be that knowledgeable about the composition and things like that. And I really was fascinated the way he discussed the composition, color scheme of the film. Though the discussion was about something else, but somehow he talked about it, which was good for me because later on I realized that I need to interview him for our magazine called Cinematography.
So गिरीश कासरवल्ली के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है. Again, as I said, 1975 batch from FTI, where most of the celebrity directors graduated. गिरीश कासरवल्ली with Deepti Nawal, who played the lead role as a male. Most of the Kasarvalli's films are in the language of Karnataka. He's based in Bangalore, and this is a film where Naseeruddin Shah acted. Let me just see if there is a poster. No, there is no poster. So ये फिल्म जो है, क्योंकि उसने अब कोई आदमी, say for example, I'll just give another example. एक आदमी यूएसएसआर के अंदर फिल्म बनाता है जिसका नाम है तारकोस्की. तारकोस्की का कौन सा फिल्म है जो उसने यूएसएसआर में नहीं बनाया, किसी दूसरी कंट्री में बनाया? बताइए. The Sacrifice. करेक्ट. Nostalgia. और Nostalgia. क्या बनाया उसने? इटली पे. ओके. और Sacrifice सीरीज पे. और so what I'm saying is, what I'm trying to say is, sometime now the same question I would indirectly formulate. ये सिनेमेटोग्राफी के लोग जरा कान खोल के सुने. Which among the following films Tarkovsky worked with cinematographer Sven Nykvist? 1, 2, 3, 4. तो Nykvist के साथ, क्योंकि Nykvist is a Swedish-based cinematographer, and Sacrifice was made in Sweden in a Swedish language. So indirectly he connected that question with the Sven Nykvist. Sven Nykvist वर्ल्ड के जो टॉप 10 सिनेमेटोग्राफर्स माने जाते हैं आज तक की हिस्ट्री के अंदर, उसमें स्वेन निक्विस्ट का भी नाम आता है. अभी हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम वन टू ऑल. तारकोस्की का सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के उसने उसको स्वीडन में ले गया और वहां पर उसने स्वेन निक्विस्ट से पूछ लिया. ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज मेड इन ए स्वीडिश लैंग्वेज डायरेक्टेड बाय तारकोस्की. अब वो डायरेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और सिनेमेटोग्राफी के लिए भी. So linking is feasible from one question to another. तो ये फिल्म के अंदर कुछ कंपोजिशन, कलर स्कीम की बात उसने की थी, which I was not able to recollect exactly what it is, and it is not a right forum to talk about. But this is an important film by गिरीश कासर. So गिरीश कासरवल्ली का जितना भी काम है, आप लोग उसका सिनॉप्सिस पढ़िए और थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे. और आप जो है कोशिश करिए कि अगर कोई एक आधा फिल्म आप देख पाए तो बहुत अच्छी बात है. द्वीपा करके उसका फिल्म है, which is a wonderful film, which we have also discussed here below. Which film of the, okay, it's Naseeruddin Shah. Which film of the Girish Kasarvalli got the National Award for Best Cinematography for Ramchandra Halkare? He is a graduate from FTI Pune. As I just said earlier, anyone who is an alumni of FTI becomes important for the exam. So Ramchandra Halkare को नेशनल अवार्ड जो है गिरीश कासरवल्ली की किस फिल्म के लिए मिला है? As I just said, it is a द्वीपा. द्वीपा के बारे में खास बात क्या है कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारा रेनी शूट है और रेन इज अ वेरी डेंजरस टू शूट. व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू ओपन द कैमरा, इट इज अ मॉइस्चर, इट विल कलेक्ट द मॉइस्चर. Because once you go in the rainy season, outside the temperature is low, inside where the camera is stored in a box, it is a little hot. So hot, तुमने देखा होगा कभी कभी ग्लासेस के ऊपर पसीना आ जाता है. तो कहाँ से आता है? Because the air outside is hot and inside it is cold. So the same is also applicable. From the hot to cold, the lens will acquire the moisture on the front surface as well as inside also at the back surface. And there is quite a possibility that it will develop the fungus. फंगस जो है लेंस के अंदर एक जाला जो बन जाता है उसको फंगस बोला जाता है. तो मॉइस्चर की वजह से रेन के अंदर शूट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है और रेन को वैसे भी शूट करना डिफिकल्ट होता है. आर्टिफिशियल रेन एक अलग चीज है. नेचुरल रेन के अंदर इस फिल्म के अंदर शूट किया गया द्वीपा के अंदर. दैट वाज वन ऑफ द रीजन. और ये एक फिल्म भी ऐसा स्टोरी है कि वो उसमें रेन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू कांट मेक इट. So that's one question of the Girish Kasarvalli. One way of asking a question, I would say, not the one question. So then the Dvipa after this, which film of the Girish Kasarvalli examine the Gandhi philosophy in the 21st century? अब ये क्वेश्चन सिनॉप्सिस से बेस्ड है. अगर आपको इनकी फिल्मों का सिनॉप्सिस पता है तो आप लगा लेंगे फिल्म का आइडिया की बात कर रहे हैं. और अगर आपने पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली तो उसका कुछ भी नाम हो आपको पता रहे. हो सकता है हसीना हो सकता है गुलाबी टाकीज हो सकता है कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो सकता है. तो तुक्केबाजी से काम नहीं होने वाला.
आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फॉर्चुनेटली एमसीक्यू के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, फॉर्चुनेट। अगर तुम गलत भी लगा के आ जाओगे तो तुम्हें मार्क्स जो है निगेटिव नहीं मिलेंगे। बट एमएसक्यू में तुक्केबाजी करोगे तो वहां पे 25% का निगेटिव मार्किंग है लास्ट ईयर का। हो सकता है इस साल निगेटिव मार्किंग चेंज हो जाए। अब इनकी खोपड़ी कभी भी घूम जाती है, उनको लगता है तुक्के लोग ज्यादा लगा रहे हैं तो चलो 50% कर देते, 100% भी हो सकती है। तो सिलेबस को ध्यान से देखना, जब भी निकलेगा अनाउंसमेंट होगा मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, मैं तो ध्यान से देखूंगा ही, बट आप लोगों को देखना ज्यादा जरूरी है। विच फिल्म, हाँ, तो ये टर्टवाइज एंड इनकार्नेशन। अब ये भी एक झंझट है कि वो लोग वहां पर इंग्लिश का नाम देंगे या ये जो ऊट पटांग का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कुर्मा वात्रा, ये अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग, अब ये जैसे हसीना, गुलाबी टॉकीज, थाई साहिबा, ये मोरलेस हिंदी नाम है, और गुलाबी टॉकीज तो इंग्लिश नाम सही लगता है, एंड हसीना इज ऑल्सो ए वेरी पॉपुलर नेम। तो I hope that they will also give you English translation of their film. अब जैसे इसके अंदर ये English translation नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाम यही है, करेक्ट आंसर यही है इसका। तो that is you need to remember both the answers name, English version as well as the original version. जैसे थम्पू है, अब वो ओरिजिनल नाम उसका वही है, उसका हो सकता है ट्रांसलेशन दें या वो लोग ना भी। नौकर की कमीज, जैसे मैंने पहले बताया था, मणिकौल की जितनी भी फिल्में हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ये पहला फिल्म है मणिकौल का जो इंटरनेशनल फंडिंग से बना था। इट वाज फंडेड फ्रॉम रॉटरडैम। रॉटरडैम के अंदर कभी ना कभी आप ये बात पढ़ेंगे, रॉटरडैम के अंदर एक फिल्म ग्रांट है जिसका नाम है हुबर्ट बाल फंड। हुबर्ट बाल फंड के अंदर फिल्म पिच हुआ था ये, और इट वाज फंडेड बाय कपल ऑफ टेलीविजन स्टेशंस। फिल्म बहुत महान नहीं है, as I said, most of the Manikol's films are not very engaging, I would say, but there is a fan club of Manikol, so that's it. But I am not from that fan club. नौकर की कमीज जो है, विनोद कुमार शुक्ला एक हिंदी बेल्ट में राजस्थान का राइटर है, उसकी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो राजस्थान के कुछ विजय दानदेथा इज मच मोर पॉपुलर राइटर, पॉपुलर इन द सेंस के उसको थोड़ा लोग, उसकी कहानी पे कोई प्ले भी हो जाता है, उसकी कहानी पे मणिकौल ने बहुत पहले फिल्म भी बनाया है, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर शाहरुख खान को लेके फिल्म बनाया अमोल पालेकर ने। तो विजय दानदेथा की स्टोरी पे क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, उसका कोई कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज या ऐसे कुछ का था, उसके ऊपर था। तो विनोद कुमार शुक्ल की स्टोरी है नौकर की कमीज। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब मैंने कंफ्यूजन करने के लिए श्रीलाल शुक्ल भी डाल दिया, तो शुक्ला मतलब कुछ भी, कोई भी शुक्ला नहीं चलेगा, पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन से वाला शुक्ला। विच एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ कोरंगी कैरेक्टर इन द क्लाउड डोर। ये दूसरा एक और फिल्म था मणिकौल का, जो इरोटिका सीरीज था, जो मैंने बताया सीरीज वही था, बट इसका ये जो एपिसोड था क्लाउड डोर वाला, उसके अंदर रोल किस लड़की ने प्ले किया, because it has a nude shot in the film, so he found not any actress but only the Anu Agrawal, who was kind model at that time. और अनु अग्रवाल ने जो है उस फिल्म में she played the role of कोरंगी। तो थोड़ा आइडिया लगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मीता वशिष्ठ का भी न्यूड है उसके अंदर, क्या बोलते हैं, कौन सा फिल्म है जो मैंने अभी बताया, सिद्धेश्वरी के अंदर पानी के अंदर नहाते हुए कुछ शॉट है मीता वशिष्ठ के उसके अंदर। तो लगता है, और उसने एक दो फिल्म और की है मणि के साथ, तो लगता है कि हो सकता है मीता वशिष्ठ हो, बट इफ यू डोंट नो देन इट विल बी डिफिकल्ट। अनु अग्रवाल played the role because there was nudity in the film, and since as the erotica series, erotica मतलब erotica होता है, so who played the lead role in the film नजर, जो हमने पहले बात कर ली है, नजर डायरेक्टेड बाय मणिकौल। वो पोस्टर दिखा चुका हूं मैं आपको। शेखर कपूर जो है, मेल कैरेक्टर जो है शेखर कपूर का है, जो फीमेल है इस मणिकौल डॉटर, उसका नाम मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, तो करेक्ट आंसर इज दिस। हाँ जी, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन directed by Manikal is an adaptation of the play that is based on Kalidasa's one of the greatest writer of Sanskrit language, who played the role of Vilom. अब
थोड़ा सा जो एक्टिंग के लोग हैं वो लोग जाग जाओ थोड़ा सा, कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नॉवल है जो हिंदी थिएटर के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्म्ड प्ले है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, दो ऐसे प्ले हैं मोहन राकेश के जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किए गए। जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग है, उसी की टक्कर का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। और तो इसमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर है, नाम क्या है उन कैरेक्टरों का। तो विलोम नाम का उसमें एक कैरेक्टर है, अब किसके ऊपर बेस्ड है, कालिदास है क्या है। तो अगर आपने कभी उसको थोड़ा सा सिनॉप्सिस नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता लगे। थोड़ा डिटेल जो है ये एक्टिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन के लिए भी है, और एमसीक्यू तो यहाँ पे बना हुआ है। अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कौन आदमी रहा होगा। ओम शिवपुरी थिएटर में बहुत काम किया है, सिनेमा के अंदर काम बड़ा घटिया काम है ओम शिवपुरी का। और सारे मैंने पुरी इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पर, अमरीश पुरी, ओम पुरी, ओम शिवपुरी। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम ओम शिवपुरी सोच नहीं सकते, और वो ओम शिवपुरी ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कभी इतना ट्रिकी क्वेश्चन भी बन सकता है कि until unless you don't know you will not be able to। तो ये एमएसक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। विलोम के अलावा और कौन से कैरेक्टर है वहां पर? भाई एक ही आदमी का मोनोलॉग थोड़ी चल रहा है, ये एक ही आदमी का मोनोलॉग तो नहीं है, तो वहां पे दो तीन और भी लोग होंगे। तो और कौन कौन से लोग हैं फिल्म के अंदर, तो वो पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है और एमएसक्यू में भी आ सकता है। उसकी रोटी मणिकौल का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट फिल्म है। इट वाज द फर्स्ट फिल्म आई सपोज वेयर which it has many experiment done in that film. You may like the film, may not like the film, but you should know about it. So उसकी रोटी डायरेक्टेड बाय मणिकौल इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया, मणिकौल की ज्यादा फिल्में जो है किसी ना किसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं। पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं वो ही नाम हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सारे नाम ही हो। तो अगर तुम्हें पता नहीं है धर्मवीर भारती की कौन कौन सी स्टोरियों पे काम हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी स्टोरी पे काम हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये जो है उसकी रोटी जो है नन ऑफ द अबव है। तो अब जरा थोड़ा सा कष्ट लेना घर पे जाके और देखना कि ये किस किस कहानी के ऊपर बेस्ड है। आधा काम मैंने कर दिया है, आधा काम खुद भी करो। Which among the following option is a false about Shriram Raghavan? Shriram Raghavan, since he is a graduate from FTI Pune, so his work is important to know which are the film which he has directed. Not so many films, but whichever film he has directed. He directed Andhadhun and Ek Hasina Thi, correct? He directed Badlapur and Agent Vinod, yes. He did not direct Johnny Gaddar, नहीं, Johnny Gaddar उसने डायरेक्ट किया है. He did not direct बधाई हो, he did not direct बधाई हो. ये थोड़ा करेक्शन चाहिए इसके अंदर, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका सी है और ये बधाई हो वाला यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि बधाई हो का इससे कोई लेना देना नहीं है और इट शुड बी रीफॉर्मुलेटेड। तो करेक्ट आंसर उसने जॉनी गद्दार है, ये करेक्शन चाहिए। मैं आई विल मार्क दिस करेक्शन, 33 के अंदर जो है करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, ये बड़ा अजीब सा नाम है, मैं कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, बट ये इंग्लिश नाम जो है, पॉपुलर नाम है इस फिल्म का। अगेन है मलयालम लैंग्वेज फिल्म, डोंकी इन द ब्राह्मिन्स विलेज। इसका ब्राह्मिन्स विलेज में नाम मिलेगा कभी आपको, डोंकी इन द एलीट कॉलोनी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बट जो पॉपुलर नाम है इसका डोंकी इन द ब्राह्मिन्स विलेज है। और दूसरा फिल्म है अम्मा आर्यन, रिपोर्ट टू मदर। दीज आर द टू फिल्म्स व्हिच आर वेरी पॉपुलर, नॉट आई विल से पॉपुलर, which are important film in the Malayalam language when it comes to the art house. And why this film is important? Because John Abraham is a graduate from FTI Pune, again the same batch 1975 as I said. तो ये वाला जॉन अब्राहम नहीं, ये एक्टर जो है ये अलग आदमी है और ये अलग आदमी है। तो जॉन अब्राहम, the director who directed these films over there, is an important name for you to understand and remember also. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर कोई आदमी मलयालम सिनेमा के ऊपर दो इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करेगा, तो ये दोनों फिल्मों का नाम वहां पर जरूर मेंशन किया जाएगा। कुछ किताबें अगर आपने पढ़ी हो रीजनल सिनेमा के ऊपर, तो इन दो फिल्मों का डिस्कशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आधा आधा पेज, एक पेज जो है
you would always find. John Abraham, photograph मेरे पास यहाँ नहीं है. कुछ लोगों के photograph ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. He is one of them. Okay, ये question पिछले साल सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछा गया था, दूसरे तरीके से पूछा गया था. जो बुक के अंदर है वो क्वेश्चन वो यहाँ भी होगा दूसरे वाले सेक्शन में. अनूप सिंह is a graduate from FTI Pune. Anup Singh is a graduate of FTI Pune. तो who directed the songs of Scorpion? ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर MCQ के अंदर. लास्ट ईयर का MCQ देखेंगे आप तो उसके अंदर सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन क्वेश्चन था. मैंने यहाँ पर थोड़ा एक लेवल और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है उसका कि द सॉन्ग्स ऑफ स्कॉर्पियन डायरेक्टेड बाय अनूप सिंह फीचरिंग इंटरनेशनली एक्लेम्ड ईरानियन एक्ट्रेस. ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है. जिन लोगों को थोड़ा बहुत ईरानियन सिनेमा के बारे में पता है, and one of the actress which has acted not only in the Iranian film but also in some French film. So Golsh Farhani is the lead actress in that film, and she's based in Paris because she's in exile. She no more work in the Iranian cinema. There was some issue when she was there. She did certain films where she was banned in the Iran, but she is well-known actress because she's settled in France and she has acted in some of the French film also. So this is a question which they did not ask that difficult, but they asked songs of Scorpion, who directed it. So which I have already told in the question. So that this is a little more difficult to answer rather than the one which they asked. But as I said, easy तो सभी कर देंगे. Question क्या है, difficult कौन करता है? एक marks का झगड़ा होता है, ध्यान रखना. I know certain people who got 69.5 marks out of 100. And the cutoff in acting was 70 last year. So imagine you was not shortlisted for the audition because you had half marks less than someone who received the call. एक marks का झगड़ा है यहाँ पे. ये मत सोचना रे कि तो marks से क्या फर्क पड़ रहा है. क्या फर्क पड़ रहा है मतलब भार. Okay. Which among the following was never the chairman of governing body of FTI? बड़ा important question है ये FTI के point of view से. ये tricky भी question है. Governing body एक अलग चीज होती है और director एक अलग चीज होती है और chairman एक अलग चीज होती है. So we are asking who among the following was never the chairman of the governing body of FTI? Last time when the strike happened in FTI, the agenda of the strike was we do not want Gajendra Chauhan as our chairman. We want a respected name to be chairman of FTI. Okay. So chairman is important. अब इसमें अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम फंस जाओगे. Shyam Benegal was chairman of FTI. Adur Gopalakrishnan was chairman. Saeed Akhtar Mirza was chairman. Ritvik Ghatak was never the chairman, but he taught in FTI for 1 year or so. That's why he is connected with FTI. Ritvik Ghatak is also an important filmmaker from West Bengal, but his connection with the FTI is that he taught few months, I would say not even a 1 year probably, in FTI when around 1975, but he was never the chairman. So Ritvik Ghatak is the correct answer because he was not the chairman. Which among the following FTI graduate did not receive Padma Shri? अब ये क्वेश्चन सिनेमेटोग्राफी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हालांकि सब ये इंपॉर्टेंट लोग हैं अपने आप में. AK वीर को पद्मश्री मिल चुका है. संतोष शिवन को पद्मश्री मिल चुका है. नरेश बेदी वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर एंड डायरेक्टर को पद्मश्री मिल चुका है. विदु विनोद चोपड़ा को पद्मश्री नहीं मिला है. तो मेरे हिसाब से विदु विनोद चोपड़ा शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव्ड पद्मश्री, दो ही थिंक दैट ही डिजर्व ऑस्कर. He is not interested in Padma Shri, etc., etc. But that is his myth, illusion in his life. So Padma Shri, who among the Padma Shri के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इसमें से वीर साहब जो है FTI ग्रेजुएट है, संतोष शिवन FTI है, नरेश बेदी FTI है और विनोद चोपड़ा भी FTI है. इसलिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है. उनकी खोपड़ी में क्या आ सकता है? I was always interested in that in terms of permutation and combination. For which film Asmi's film director Janu Barua received Filmfare debut award? अब ये Asmi's नाम लिखा है मैंने और debut award का मतलब होता है पहली film. Now this was a joke when he received the debut award for this film because he has directed many films in Asmi's language before he made a film in Hindi.
बट उसको डेब्यू अवार्ड जो है, फिल्म फेयर का डेब्यू अवार्ड जो है, मैंने गांधी को नहीं मारा, he received that. Though all these Papuri, Aparupa, Ferengoti, they all are Assamese language film which he directed before, much before the मैंने गांधी को, but वो debut film नहीं है उसका. His irony is also there a little bit, but he received the debut award for the मैंने गांधी को नहीं मारा. Who among the following Hungarian director had conducted a workshop in FTI? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैंने डाल दिया है वैसे ही, थोड़ा आप लोगों को पता रहना चाहिए कि किस टाइप के वो डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है अपने आप में. इस्तवान गाल, इस्तवान जाबो, जुल्टन फाबरी, मार्ता माजरोहा. तो इस्तवान गाल came to FTI and did a workshop with a direction student many years back when he was alive. So इस्तवान गाल is the correct answer. Though such kind of question would not ask, but मैंने वैसे डाल दिया है, थोड़ा सा उनको पता रहना चाहिए. Who among the following German directors had conducted workshop in FTI? अब ये तुम कहोगे हम कहाँ से ढूंढ दे रहे हैं, ये कौन कौन लोग आए हैं वहां पर, थोड़ा आइडिया है, वैसे ही रहना चाहिए लोगों को. Helma Center-Braham is a women director from Germany. She conducted a workshop when I was a student there. इसलिए मैंने नाम डाल दिया है. Wim Wenders never came, Werner Herzog never came, Leni Riefenstahl never came. तो ये सब बाकी के नाम करेक्ट नहीं है. Helma Center-Braham is the correct name. ये करेक्शन की जरूरत है इसके अंदर. ये आंसर जो है यहाँ पर ठीक से नहीं दिया गया, मैं इसको करेक्ट करूंगा. 40. हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो Om Darbadar, NFDC production is directed by Kamal Swaroop, Manikal, Kumar Shani, Ketan Mehta. Kamal Swaroop, this is the only film which is a popular film by, popular in the sense among art house, is called Om Darbadar. If you ever find a time, you must watch it. It's a very experimental kind of film and a part of a underground cinema in the sense which is more experimental, very एक अच्छा सा शब्द radical. ये रेडिकल जो फिल्म होती है, ये रेडिकल फिल्म मेकिंग का पार्ट है. इफ यू एवर फाइंड ए टाइम फ्रॉम हियर, एनएफडीसी का प्रोडक्शन अभी रिवाइव किया है उन लोगों ने. एनएफडीसी ने बहुत सारी फिल्में जो है डिजिटाइज की हैं, तो एनएफडीसी की वेबसाइट का कुछ मेंबरशिप होता है, वहां पे ये फिल्म जो है आपको देखने को मिल सकती है. उनका भी एक चैनल है, अब वो कोई देखता नहीं है उसको, एक अलग बात है, बट वो है. और उसका मेंबरशिप कुछ लेके आप कुछ फिल्में अगर देखना चाहते हैं जो एनएफडीसी ने प्रोड्यूस की, विच आर इंपॉर्टेंट फिल्म, यू कैन वॉच दैट. काली सलवार डायरेक्टेड बाय फरीदा मेहता इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ. ये क्वेश्चन एफटीआई में किसी जमाने के अंदर 7-8 साल पहले पूछा जा चुका है. वहां जो पेपर लगे हुए हैं उनमें तुम्हें नहीं मिलेगा, बट मुझे अच्छी तरह याद है. आई वाज देयर एट द सेंटर फॉर ए फ्रेंड सन हु वाज अपीयरिंग इन एग्जाम. सो at that time I noted down few question and this was one of the question. Kali Salwar directed by Farida Mehta is based on the story of Manto. ये काली सलवार जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये फरीदा मेहता जो है एफटीआई की ग्रेजुएट है. एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, एलमुनाई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है. तो ये फरीदा मेहता का फिल्म है जिसका पोस्टर शायद कभी मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज फरीदा मेहता की शक्ल जो है दिख सकती है, नहीं है यहाँ पे, नहीं है, मिल जाएगा आसानी से उसका फोटो फेसबुक पे. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फॉर्मुलेट किए हैं, बट एज आई सेड दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव लिस्ट. एफटीआई के एलमुनाई में बहुत सारे टेक्निकल और भी लोग हैं जिनके ऊपर भी थोड़ी सी बात की जाएगी, और डायरेक्टर्स भी हैं कुछ. क्विकली वी विल रन थ्रू देम आल्सो. सिनेमाटोग्राफर्स का पार्ट शायद हम लोगों ने कर लिया है या नहीं करा है, ये हो गया है, ठीक है जी. फिर एडिटर का थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग. हाँ जी, ये एडिटर जो है, बहुत सारे एडिटर, स्टार एडिटर नहीं है वहां से, कुछ 4-5 लोग हैं जिनका तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा. सुई धागा मेड इन इंडिया फिल्म इज एडिटेड बाय मोनिशा बलवाड़ा, एफटीआई की लड़की है ये. जमीन मर्चेंट एफटीआई की लड़की है. अंतरा लाहरी एफटीआई की लड़की है. चारूश्री रॉय, चारों एफटीआई के लोग हैं. ये चारों लोगों ने काफी काम किया है, काफी इन द सेंस कि मोनिशा ने उतना नहीं किया है, बट जबीन अंतरा का भी उतना नहीं है, बट चारू ऑल्सो. So Charu did this film, Sui Dhaga Made in India. So you should know all these names and please note down this homework for yourself. Find out all, अभी थोड़ा और भी हम आगे बढ़ेंगे. Find out all other work by these people, क्योंकि लोगों ने और भी काम किया है यहाँ पर. ये एक ही सुई धागा तो लास्ट 218 का फिल्म है, बट क्योंकि वो एफटीआई का आदमी ने एडिट किया है इसलिए पता. रिसेंटली भी जैसे अभी हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे. Which among the following option is false about सारा आकाश? अब ये क्यों मैंने ये क्वेश्चन बनाया है सारा आकाश?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि उस जमाने में लिटरेचर बेस्ड फिल्में होती थी और जो है राजेंद्र यादव के नॉवल पर ये फिल्म जो है बेस्ड है. So it is based on the novel by novel Sarakash by Rajendra Yadav. Yes. Rajendra Yadav and Manu Bhandari were married for quite some time and they did together a novel. ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा नॉवल है जिसमें राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलके लिखा है? अब तुम कहोगे उसमें कौन सी तोप चला दी, दो लोग मिलके बहुत कुछ काम कर लेते हैं. लिटरेचर में दो लोग मिलके कभी नॉवल लिखते हैं ऐसा बहुत कम सुनने में आता है. दो म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी आपने सुनी होगी, बट लिटरेचर के अंदर दो लोग मिलके नॉवल लिखते हैं ऐसा कम है. तो एक नॉवल है 1 इंच मुस्कान, लिख लो, मैं भूल जाऊंगा. लिटरेचर के अंदर पता नहीं एक सेक्शन में क्वेश्चन डाला है कि नहीं डाला मैंने. विच नॉवल इन द हिंदी लिटरेचर इज रिटन बाय 2 पीपल, वन इज AXYZ और नॉवल का नाम है 1 इंच मुस्कान. अब मुस्कान को कोई मेजर नहीं कर सकते कि 2 इंच दे दो मुस्कान, 4 इंच मुस्कान, बट उसका नॉवल है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है 1 इंच मुस्कान, जिसका एक चैप्टर मन्नू जी ने लिखा है और एक चैप्टर राजेंद्र यादव ने लिखा है. दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ दैट नॉवल. अब वो कौन सा चैप्टर अल्टरनेट है, वो अगर वो तुमने पकड़ लिया कि भाई ये वाले चैप्टर राजेंद्र यादव के हैं, ये वाले चैप्टर मन्नू जी ने लिखे हैं, तो अच्छी बात है. नहीं भी पकड़ा तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि बिकॉज देयर इज ए कंसिस्टेंसी इन राइटिंग इन द नॉवल. That's another experiment was done in Hindi literature. K.K. Mahajan received the National Award for Best Cinematography. Renu Saluja received the National Award for Best Cinematography. It is directed by Basu Chatterjee. इससे पहले मैं भूल जाऊं, बासु चटर्जी का नाम आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए अलग से पेपर पे. बासु चटर्जी का नाम अलग से आप लोग लिख लीजिए. बासु चटर्जी जितने भी हिंदी के अंदर कमर्शियल कम आर्ट हाउस डायरेक्टर हुए हैं उसमें बासु चटर्जी का नाम है. बासु चटर्जी ने मन्नू जी के साथ भी काम किया है. दो लोग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना. एक आदमी है बासु भट्टाचार्य, एक आदमी है बासु चटर्जी. दोनों अलग अलग लोग हैं. भट्टाचार्य अलग होता है, चटर्जी अलग होता है, ध्यान रखना. तो बासु चटर्जी ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो पॉपुलर रही हैं अपने आप में, सिंपल फिल्में रही हैं और किसी ना किसी स्टोरी या नॉवल के ऊपर बेस्ड रही. तो सारा आकाश जो है थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें हैं. उस जमाने में रेनू सलूजा नहीं थी, तो रेनू सलूजा का आंसर जो है होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि रेनू सलूजा was not it was made long back and Renu Saluja graduated around 1975, same batch from Vidunod Chopra. तो बाकी सारी चीजें ठीक है, रेनू सलूजा ने वो एडिट नहीं किया है, तो इसलिए वो सब करेक्ट नहीं है. 2006 ग्राफिटी अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ एफटीआई. देखो अब यहाँ पे आ गया ये नाम. In 2006 graffiti is a ex-student alumni association of FTII released a title Invisible the Art of फलाना ढिमका. अब नाम क्या होगा इसका? रेनू सलूजा, श्रीकर प्रसाद, असीम सिन्हा, मोनिशा आर बलवाड़ा. अभी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है कि जो स्टार एडिटर एफटीआई का हुआ है वो है रेनू सलूजा. ग्राफिटी जो है निकम्मे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं करती है, साल में एक बार मिलती है, खाना खाती है, बियर पीती है, तो डांस वांस करते हैं लोग वहां पे बैठ के और कुछ नहीं करते. बट ये काम गलती से एक इनसे हो गया और रेनू सलूजा के ऊपर एक किताब, छोटी सी पतली सी किताब है, वो जो है छप गई. इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इनविजिबल द आर्ट ऑफ रेनू सलूजा. अब मुझसे ये मत पूछना कि किताब कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो मिलेगी नहीं. वो छपी थी, कहीं खो खा गई, कहीं गलती से किसी के पास पीडीएफ मिल जाए इधर उधर से तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड दिस बुक. हाँ जी, बट पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर गलती से कोई क्वेश्चन बना दे, कोई पागल आदमी बैठा हुआ वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए कि किताब किसके ऊपर थी. हाँ जी. Who among the following received maximum number of national award for editing? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस मत जाना. मैंने रेनू सलूजा बोला है स्टार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेनू सलूजा ही को मिले होंगे. हो सकता है किसी और आदमी को मिले, हो सकता है किसी और आदमी को
अवार्ड मिले हों मैक्सिमम नंबर। रेणु सलूजा, श्रीकर प्रसाद, असीम सिन्हा, मुनीषा और बलवाड़ा। क्योंकि यहाँ पर कोई एडिटिंग का आदमी नहीं है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी को पता होगा, बट अगर किसी को नेशनल अवार्ड के बारे में पता रहता है तो वो जान जाएगा। श्रीकर प्रसाद वो आदमी है जिसने मणिरत्नम की फिल्म एडिट की है, जिसने मणिरत्नम की फिल्म एडिट की है। अभी मणिरत्नम का एक लेटेस्ट फिल्म है, अगर तुम जाके ढूंढोगे उसमें एडिटर कौन है तो उसमें कौन आदमी दिखाई देगा आपको? श्रीकर प्रसाद। श्रीकर प्रसाद का एक इंटरव्यू हमने अपनी मैगजीन में छापा था लॉन्ग बैक। वेरी नॉलेजेबल मैन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। You must read that interview sometime, even if you are not going to appear in editing, but you must read that interview. तो अभी ये more or less 10:30 हो चुका है और भी चीजें धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो मेरे भरोसे मत रहो, अपना अपना करते रहो साथ में। 2 घंटे में जितना सुनने में आ जाएगा अच्छी बात है। मैं इसमें से और कुछ चीजें रिफाइन करूंगा थोड़ा सा। इसमें बहुत सारा मैंने कचरा उस टाइम में डाल दिया था, कचरा इन द सेंस जिसकी FTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, वो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। थोड़ा कान मान के पता, कान फिल्म फेस्टिवल के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं जो लोग हम कवर नहीं करेंगे। फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर इंपॉर्टेंट है, 64 क्वेश्चन है, तोते की तरह रटे होने चाहिए किसको कौन से साल में मिला। ईयर वाइज चाहे ना भी पता हो, बट ये पता होना चाहिए विच फिल्म वॉज नॉमिनेटेड एंड विच वॉज द विनर, क्योंकि 5 ही फिल्में नॉमिनेट होती है वहां पे, उसमें एक फिल्म जीतती है। तो विनर के साथ मैंने और भी फिल्में डाली है ईयर वाइज, जिससे थोड़ा कम से कम नाम पता लग जाए आप लोगों को। ये मत समझना कि आज तक नहीं आया तो अभी भी नहीं आया, ये मत सोचो। आज तक नहीं आया इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आज तक जो क्वेश्चन नहीं आया है वो ही क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। जो क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं कि कभी ना कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। खेल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो आई एम गिविंग यू वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना हम लोग रैप अप करने वाले। लिंक भेज दिए गए हैं मंडे ट्यूसडे का सिनेमेटोग्राफी के लोगों को। किसी को ना मिले तो थोड़ा पहले जाग जाया करो, 2-3 घंटे पहले। अगर आपको लिंक मॉर्निंग में नहीं मिला 12 बजे तक तो एक मेल ठोक दो। कल इमीडिएटली आई रिमेंबर आई डिडंट सेंड अ मेल फॉर टुडेज क्लास, सो आई क्विकली डिड इट। कभी कभी हो जाता है, बट अभी क्या है मैं एडवांस में सारे वो बना के रखूंगा और भेज के रखूंगा जिससे झंझट ना पड़े। हाँ जी बोलिए। सर प्रोड्यूसर का नाम भी याद रखना पड़ेगा क्या? नाम याद नहीं रखना पड़ेगा, मैंने बोला था कि पागल लोग हैं वहां पर, पागल लोग बैठे हुए हैं। लास्ट टाइम प्रोड्यूसरों के नाम पूछ लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड what is going on in their mind. This is ridiculous to remember the bloody producer's name. Producer is not a creative person. It's a creative institution where you're going. दुकान है, प्रोड्यूसर मतलब दुकान चला रहा है एक आदमी। अब एक आदमी छोले भटूरे की दुकान चला रहा है, एक आदमी कुछ साइकिल बेच रहा है, दूसरा आदमी फिल्म बेच रहा है। बट उसमें फर्क यह है कि द प्रोडक्ट हैज ए क्रिएटिविटी। जो फिल्म है वो एक आर्ट फॉर्म। तो प्रोड्यूसर आर्टिस्ट नहीं होता, वो अपने आप को कुछ भी बकवास लिखता रहे वो एक अलग बात है। पैसा वही लगाता है, रिस्क भी वही लेता है, सारे काम वो होता है, बट उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना। बोले मैं क्रिएटिव हूं, एक प्रोड्यूसर बोले मैं क्रिएटिव हूं और दूसरा प्रोड्यूसर बोले मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं। तो यू कैन ओनली से कि आई हैव प्रोड्यूस्ड फिल्म्स व्हिच आर आर्ट हाउस फिल्म्स। समवन विल से कि मैं तो कमर्शियल फिल्म बनाता हूं, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है आर्ट वार्ट से, मुझे तो पैसा कमाना है। तो ये बड़ा अजीब ट्रेंड पिछले 1-2 साल में मैंने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन जो है। अब वो रे की फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी तो समझ आ गया, चलो 1 मिनट के लिए। बट ये और उठपटांग के फिल्मों के प्रोड्यूसर पूछोगे तो दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स अ रिडिकुलस क्वेश्चंस। प्लीज लुक इनटू द साउंड रिकॉर्डिंग क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड हाउ रिडिकुलस दीस पीपल कैन बी। तो मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर के नाम याद रखना तो बेवकूफी है। बट कोई मंगल पांडे टाइप जो फिल्म है वो इसलिए कि बॉबी बेदी एक इंपॉर्टेंट आदमी है दिल्ली बेस्ड, तो बॉबी बेदी ने प्रोड्यूस किया है तो वो ठीक है, चैनल 4 का प्रोडक्शन है कोई तो ठीक है। बट आई डोंट थिंक दैट यू शुड वेस्ट योर टाइम इन रिमेंबरिंग द नेम ऑफ प्रोड्यूसर्स। बट मैंने अपने हिसाब से जैसे फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर का रखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट लोग हैं उसके अंदर। जिसने भी फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ है वो आदमी बड़ा आदमी हो गया। जिसका भी नाम कभी तुमने हिस्ट्री में सुना है, कभी सिनेमा की हिस्ट्री में, वो इसलिए सुना होगा कि उसका फिल्म जो है फॉरेन लैंग्वेज ऑस्कर के लिए कभी ना कभी इटली फ्रांस से नॉमिनेट हुआ हो। तो दिस इज इट। हाँ जी, और बोलिए। आई डोंट रिकमेंड, बट कुछ भी पूछ सकते हो, दादागिरी है उनकी। Hello, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, is there a book for where we can read the history of cinema?
पैरेलल चार पांच किताबें हैं, बट वो बड़ा स्कैटर्ड है सारा का सारा चक्कर। एक किताब जो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं पा रही है, उसका मैं वो क्या बोलते पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल पाया। एक सिनेमाया करके एक मैगजीन हुआ करती थी किसी जमाने में, उसकी एडिटर जो है उन्होंने वो किताब इंडियन सिनेमा पे लिखा था। एक फ्रेंच आदमी है, उसका भी इंडियन सिनेमा पे किताब है, जो भी पढ़ सकते हो, उसका नाम है मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। फ्रेंच मतलब इंडिया आता रहता है वो आदमी, मैं भी जानता हूँ उनको इमीडिएटली। वो इजिली अवेलेबल है। वो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के ऊपर है, उसमें सब इंफॉर्मेशन लेवल का काम जो है, काफी मसाला उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो पढ़ सकते हो। रिमाइंड मी बाय सेंडिंग ए मेल, आई वुड बी एबल टू फिगर इट आउट। आई नो हिम पर्सनली आल्सो, बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम ऑफ दैट फेलो राइट नाउ। श्योर सर। वो किताब बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, उसको पढ़ सकते हो। ऐसे ही होता है इंडिया में, जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो बाहर के लोग ही करते हैं हमेशा। इट इज इन एवरीथिंग। एक रामनगर की रामलीला होती है, उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो अमेरिकन आदमी करता है। इंडिया में सब लोग सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, तो ठीक है, अनुराधा कपूर ने भी उसके ऊपर काम किया है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो बाहर के आदमी करता है। तो खैर, these are the some question. Please carry on with your own work every day. One day is not enough. Every day you need to devote at least 8 to 10 hours. This is just a small support, and that's it. There's a much more you have to do. Hello? by yourself. Yeah. हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, आप पिछली बार बता रहे थे नाट्य शास्त्र के लिए आप कोई बुक देखोगे, कुछ मिला आपको? नाट्य शास्त्र पे एक खतरनाक किताब है, उसका नाम है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का किताब है। हाँ सर, वो पर मिला नहीं कहीं पे भी। हाँ, वो मैं ऐसे ही होता है, खतरनाक किताबें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। वो मोस्ट प्रोबेबली किसी जमाने में मैंने थोड़ा सा देखा था एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाने के लिए, वो तो मैंने किसी से उधार ली थी, उसको फोटोकॉपी कराना भूल गया था मैं, तो मैंने वापस कर दी थी वो। तो वो मोस्ट प्रोबेबली साहित्य अकेडमी या संगीत नाटक अकेडमी का पब्लिकेशन है। संगीत नाटक अकेडमी का पब्लिकेशन होना चाहिए, या फिर आईजीएनसीए का पब्लिक। तो कपिला वात्स्यायन इज द फाउंडर ऑफ आईजीएनसीए, तो या तो आईजीएनसीए का पब्लिकेशन होना चाहिए वो नाट्य शास्त्र पे, या फिर वो संगीत नाटक अकेडमी, वो सरकारी रैकेट में थी वो, तो हो सकता है एसएन ने पब्लिश किया हो। तो किसी आदमी को दिल्ली में तुम्हारा कोई दोस्त हो उसको भेज के पूछ लेना। सरकारी लोग हैं, सोते रहते हैं लोग किताब छाप के, तो उनका वहां पे बुक सेंटर में अगर मिल जाए वहां से तो पता करवा सकते हो एसएनए के अंदर, बट वो शायद ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है। बट और भी कोई भी किताब किसी की, देखो वो तो एक मेन अथॉरिटी है, बट और भी कोई किताबें ढूंढ सकते हो, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। मैंने कुछ यूपीएससी का कोई एक साइट ढूंढा है, उसमें मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसमें कुछ बहुत सारे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के ऊपर जो पूछे गए हैं। उनका एक एग्जाम होता है जिसका नाम है ये कुछ नेट करके कोई एग्जाम होता है उनका। तो ये एक्टिंग का जो नेट एग्जाम होता है उसमें कुछ नाट्य शास्त्र के क्वेश्चन मैंने ढूंढे थे यूपीएससी के साइट पे, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर पिछले लगे हुए हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन नाट्य शास्त्र, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो, उनको मैं एमएसक्यू बना लूंगा, वो छोटी सी बात है मेरे लिए। बट इस टाइप की साइटों पे जाके ढूंढ ढूंढ के जो है तुम थोड़ा सा देख सको। एक मैंने एग्जांपल बता दिया तुम्हें, ये जेट वाला, सॉरी नेट, जेट तो हमारा एग्जाम होता है। नेट जो है, नेट का जो यूपीएससी का जो पेपर होता है प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए, उसमें जो एक्टिंग का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे वहां पर पूछे गए हैं पास्ट में, तो वो उस साइट में आपको मसाला मिल सकता है। ओके सर। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे भरोसे मत रहो, खुद ही करो। मेरा तो कुछ पता नहीं है कि करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि आई हैव 10 अदर थिंग्स टू डू इन माय लाइफ, so this is just one, but I have given you sources from where if you take some pain you will be able to find it. ठीक है जी, तो ये है। अभी जो है एक फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, मैं भूल जाऊंगा इससे पहले लास्ट में क्लोजिंग के अंदर, हेमंती सरकार ने एडिट किया है वो फिल्म, और सेतु पांडे करके सिनेमाटोग्राफर है, उसने शूट किया है। तो कंटेम्प्रेरी काम, ये सुई धागे में मत फंसे रहना, 2018 का फिल्म है वो। लाल सिंह चड्ढा जो है ये रीसेंट फिल्म है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लाल सिंह चड्ढा पे पूछा जाएगा, ना कि सुई धागा पे। तो 2019 में क्वेश्चन का रेलेवेंस था, आज इसका रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस दूसरे तरीके से है, क्योंकि एफटीआई की एडिटर है चारुश्री रॉय, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आज क्वेश्चन बनेगा तो हेमंती सरकार के ऊपर बनेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर फॉर सुई धागा, और सॉरी लाल सिंह चड्ढा, तो उसमें आंसर होगा हेमंती सरकार। ठीक है जी।